बाबा खुश, बहुत अभी खुश है खुश, तो हाँ? अभी खुश। ये बाबा की चाल थी, ये या हाँ, बाबा की मैंने चाल उसको थी। लंदन में बोला कॉर्निया स्क्रैच कर अपना। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट फॉर एवरीबॉडी वाचिंग, आदर भी था, हम लोग 5 फ्रेम में थे एंड आदर्स हर्ट हिज आई, बट ही वाज स्टिल लाइक नहीं मैं रहूंगा पॉडकास्ट पे, लेकिन बाबा उसको बोलते जा रहे कि मत रहे, जा जा जा। And एंड फिर initially we thought इवेंट it was because he cares for others' eye and well-being, and then later he reveals. आदर इज द वन हु डिसाइडेड टू लीव एंड व्हाइल लीविंग सेड इट्स ओके, मैं म्यूट पे जाता हूँ और सुनता हूँ कॉल। उसको तुम लोग लिंक नहीं भेजते हो क्या यूट्यूब का? इज लाइक नहीं मैं रहता हूँ, तो मतलब, क्यों, जा सो जा भाई। मैं बट वीडियो एक ऑफ और करता हूँ, म्यूट करता हूँ, रहता हूँ। और ए बट रहता हूँ। व्हाई डिड ही स्क्रैच? अरे इट्स आदर ब्रो, हिज इट्स एक्सक्यूजेस आर ग्रेट। इट्स वन ऑफ अदर्स थिंग्स, ठीक है, वो ब्रो जब भी लेट आता है ना, तो उसके हाँ, पहले कुछ टेक इश्यूज होते थे, फिर ट्रैफिक इश्यूज, फिर अरे कुछ ये इशू वो इशू। आज जब भी पहला है ना, दैट्स द सैड पार्ट, वेयर व्हेन अदर सेज समथिंग, इट्स 100% जेन्युइन, बट आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज नहीं नहीं, ये चूतिया बना रहा है, ठीक है। और आज का एक्सक्यूज कुछ खतरनाक ही था, गाइस आई हैव स्क्रैच माय कॉर्निया, मतलब ये क्या हो गया इसको। फिर अंदर से बेटर लक नेक्स्ट टाइम आया। बट आज का गेस्ट एक्चुअली राहुल ने, आज का गेस्ट एक्चुअली बाबा था, क्योंकि बाबा, फन फैक्ट, हमने राहुल को तेरे पहले पूछा था कि आज करेगा क्या, लेकिन थैंक यू Bava's तू been आज आ very गया। busy with work or what? That he's not made it to the Yeah, I Yeah, have recorded not no. made podcast. it to a guest. I have not made it to a guest podcast for the last 3 guests, which are the number of guests we've had. But also, what I really like about it is I've edited them though. What I really Hmm. like about it is that, except for the first time, now we said, hey, we have a guest and all. After that, we've just refused to address that there are guests on our podcast. We've just started the conversation like this, saying, hey, Yeah, Rahul, because kaisa hai? Hey, chacha. no, but first we thought we'll put the camera off and then introduce. Except when you come to this video, it says name plus picture of Correct. person in thumbnail. तो अभी क्या तू सरप्राइज दे रहा है Yeah, पब्लिक yeah, को, I आ गया ना। understand. It's just even now, we've just continued a conversation instead of saying, But hey guys, we have with us Rahul, and then gone into other kya aadmi hai. It's just like everyone knows what's happening. ठीक है, Okay, so चल. hey guys, we have Rahul with us. Thank you so much. Thank you for having me, guys. Rahul, welcome back. You were actually one of the first 10 episodes when this podcast began, back in late 2019. अपन ने एक relationships पे YouTube studio. हाँ, नहीं नहीं, नहीं, इधर नहीं, इधर अंधेरी okay. में, जब Okay. तेरा where करली करली बाल था। With YouTube. Atul Khatri. with Yes. Tatul Khatri, and I very strongly remember that episode because it felt like I was in a train on that. हाँ, कौतुक ऐसे बीच में बैठा था, एक साइड पे राहुल, एक साइड पे करली था। Yeah. But as you see, our production quality has increased from Absolutely. there. Now we all look like we are on a corporate meeting. Uh, speaking of corporate meeting, Rahul. Yeah. एक Oh, मिनट, तू okay. एपिसोड का टाइटल तो ले ले भाई. अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इंट्रो पे टाइटल नहीं। Hello and welcome to another episode of the Internet Said So, a show we take random review absurd facts, satire, and stories, and we talk about it. And on today's episode, we have the hilarious, the amazing Rahul Subramanian. Thank you. I thought you सबसे were पहले looking तो for another adjective. All yeah, you I I said did, was said. and then I like, forgot. And then he forgot. मैं कुछ No, एक I thought he अक्षर said hilarious, amazing, and then he saw me and he's like, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. Then he's like, कौतुक को देखा, Neville नहीं, तो चलो राहुल ही ठीक है. But So thanks Rahul, for having welcome me. back. Thank you. It's a pleasure, yeah, and to be in award-winning podcast. That is won the Oh. last Yeah, award. You 3-time won the Dhaka award winning. best podcast award from Dhaka, from Kabul, and from correct. also, yeah, multiple Ballon d'Or of comedy podcasts. It's just a pleasure. Yeah, right. You just smashed your competition away, yeah. Yeah. Like nowhere. हमारे बहुत बहुत अच्छे हार्डकोर फैन है जो इज्जत से जाके हर जिधर भी पब्लिक वोटिंग होता है ना, उधर हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारे आर्डेंट टिस आर्मी जाती है। बट राहुल क्या Rafael चल रहा है? Nadal French Open, Real Madrid Champions League, and TIS. ढाका, When it Yeah, comes it is to Dhaka podcast ढाका yeah, podcast. yeah. because we famously lost the Cosmopolitan Award. Yeah. So What is yeah, and you should get more people from other countries. नहीं, वो कॉस्मो इंडिया था लेकिन। इंडिया का था। अच्छा, लेकिन हम लोग से तो ज्यादा आदर को लेके नहीं कॉस्मोपॉलिटन, आना चाहिए था लंदन से। हम लोग से ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन पॉडकास्ट है ही नहीं. मस्त। तो
ये हम लिख देते हैं अपने बायो में। लेकिन राहुल क्या चल रहा है, किधर है? कैसे तू टूर पे नहीं है भाई, घर पे कैसा है? मैं एक्चुअली बहुत वो इल्यूजन है, मैं इतना टूर पे नहीं हूँ। मैं इतना टूर पे था क्या? स्टार्ट ऑफ द लाइक 2023 के फर्स्ट 8 मंथ्स था व्हेन आई वाज टूरिंग अब्रॉड। उसके बाद जब इंडिया टूर इज द बेस्ट बिकॉज यू गेट टू बी होम, वीकेंड जाके आओ, और बस वही है, इट्स जस्ट लाइक वीकेंड्स आर आउट, सो इतना। और मैं अभी थोड़ा वो हो गया, मैं भी अपने शो से बोर हो गया। हु आर यू कैसे जा रहा है स्पेशल? शो स्पेशल नहीं बोल रहे हम लोग उसको, अच्छा। हम लोग मतलब मैं को बोल ही नहीं रहे स्पेशल, इट्स अ शो। शो। या बस हो गया, तो इट्स गोइंग वेरी वेल यार, But this इन is द now सेंस। proper stand-up, no? This is stand-up, stand-up. व्हाट डू यू मीन प्रॉपर स्टैंड What do you mean? अप? What do you mean? What is this? Yeah. What is this No, backhanded? what I meant is that now it's a It's written a set, right? scripted It's form. scripted. Yeah, 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 yeah. it is. It is. Uh, It's very मतलब ये बहुत ही funny है। लोगों को लगता है, it's been like 1.5 years since I did a crowd work show. oh, I've that's not done crowd work at all, but people still think वो तो है, but yeah, crowd work is हो गया, it's a scam यार। Who wants to do Look, crowd work? It's a like scam. every कुछ single प्रिपेयर नहीं day. करो, कुछ भी पूछो, बकवास कर, तुम कहाँ काम कर दिए, क्यों ये कोई कॉमेडी हुआ? oh, oh. But Rahul bringing out his own critics and answering them. Huh? No, Cool. No, actually, but yeah, the whole crowd work. crowd work thing is it's just taken like meaning every comic I've seen has basically done crowd work and then put one Instagram. It's Instagram content. कि मैं Yeah. material protect करता हूँ and then I'll just put. but Sir, I think what do you that is do? a smart way, right, of doing Yeah, it. that is. If you're good at it, like if you are a comedian who's doing it for the sake of doing crowd work because hey, that is what is working, then I don't know how. But if you're genuinely good at it, I think it's a great way to keep getting content out. It's still you're still showing that you're funny. So I don't know what is No, wrong no. with The, Because crowd work. what I you think. don't write anything, there's no effort, and you just like I क्या don't. है but I you're disagree. I तुम disagree जाके that सिर्फ there's no effort. तुम क्राउड को इंसल्ट कर दो, यही कर दो। नहीं नहीं तुम वो कहाँ मैं काम करता करते हूँ, दूसरे लोग नहीं करते. I'm saying that हैं? no. I think that no. I think that there is a charm बाबा in तू एक्चुअल काम में करता है, वो अलग है। no. I think that there is a charm in the I think there is charm in crowd work where when you're really curious about people and you're going into that space, which is what you sort of do, right? Uh, that's where it becomes interesting because then it's no longer dependent on the same tropes, because for 60 minutes you can't be asking every single person, hey, what's your name, what do you do, are you in a Who relationship? are you here with? Yeah, you can't do that, right? So that's where the skill is. So I disagree. I mean, Dude, you I know know. something? I feel like we are वाह। reaching a point जहाँ audience meaning ऐसा सोच के लिख के खुद अपना आएगा कि when I am कॉमेडियन asked पूछेगा तो मैं ये बोलेगा, हाँ. होमवर्क करके आऊंगा. Reverse Um, crowd work. No, but but I should ask Rahul also प्लांटेड this. रहते रे, मोस्टली ऑडियंस प्लांटेड होता है, Oh तो क्या fuck, करते हैं ना, Subbu is doing this thing तो where पैसे I No, figured out Subbu's stick on this show. His thing is he is going to be the comments on his own hilarious. videos, and then he's expecting us to clarify them. No, So that- I'm but not. I am expecting you to join me and like reveal the scam that is crowd work. in fact, Rahul, I want to do the opposite. Very sincerely, without the jokes, I want to ask you this thing. What is your like when you do crowd work? What is your intention with asking questions and things like that? Like, how are you? Like, what is your angle on it? Like when you're doing it? Angle, okay. Firstly, it's easy content, ठीक है? तो क्या होगा? तू पहले से जोक्स लिख के रखने का, कि ये पूछेगा तो ये बोल देने का, लिख के रखने का, बताने का नहीं इसको क्या करने का, ठीक है? फिर ऐसा एक्ट करने का, और कैमरा भी है ना, अपन एडिट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है ना, एक्ट करने का कि इट्स स्पॉन्टेनियस, और फिर डाल देने का, ये है। still not being genuine, but okay. yeah, but we are genuinely asking. Okay, But you're sincere, so yeah. asking. Okay, Yeah. I'll be. If you want me to answer not genuinely, I'll do that. So what? My aim in a conversation, first of all, crowd work is too. It is too taxing as a comedian to perform it, and when you're doing 1 hour shows, and when you have done multiple shows, it's even more taxing. But at some point, you also reach the limit of कितना ही तू वेरिड कॉन्वर्सेशन कर सकता है, मतलब ओके, एक है इंटेंशन, दूसरा है कि योर एबिलिटी टू हैव कॉन्वर्सेशंस बियॉन्ड अ पॉइंट, कितना ही नए एंगल्स है।
So my idea तो मेरा वही hold होता था for that, so that I enjoy, is to keep it fresh, not go to any trope that I've already done or I've already spoken about, and the way I would go about it is, there are points when you get stuck, then don't go for a conversation, don't go for a joke. Forget that you're doing stand-up comedy. It's not like कि don't go for the joke as an instruction to a comedian. नहीं, just like हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा I used to take breaks during a conversation, 30-40 seconds, wherein it's just normal conversation. ठीक है, there has to be joke है ही नहीं, जैसा हम लोग बात कर रहे हैं. No, it also And comes like joke आएगा रे, आएगा but joke. वो बहुत मुश्किल है at that moment ना, मेरे को बहुत time लगा, because I used to be ऐसा हो जाता है joke नहीं Yeah, आना. Your but that is instincts are to go for the yeah, joke. yeah. But that is So- Subbu, that's a you problem because you were funny in your first special. If you were me, you're settled with silences from the beginning. So I'm very happy with silences and not having a joke. So then, No, but you know, but but what also I'm you're thinking- very curious, Ray, Subbu. Like the Yeah. thing is, you're interested. Sorry, but you actually give a fuck about the person you're talking to, or at least to make it look like you care about the person you're talking to, which is But a that's great the skill. key. That's the Yeah, key. yeah. No, That's a great if you skill. see how many crowd work videos I've put, ठीक है, there are 3 videos, 3 मोटा 3 YouTube video है, ठीक है, 3 साढ़े 3 टाइप, और before the special came out, and that was the only thing I had put up, and there were hardly any stuff that I put out, right? Because when you look at your crowd work material also, after a point of time, all of बहुत कम variety होता है, and it is tough to get variety even if you're being genuine, having a nice conversation. So that's why I don't have a lot of stuff online, because I'm like, हाँ ये funny है, but ये वैसा ही sound कर रहा है, and that's why the special was a big challenge. Has this happened to you, Subbu? Sorry, but has this happened to you? If you were doing 2 shows back to back, like a 6 o'clock show and a 9 o'clock show, you've done a reference from the 6 o'clock show Yeah. in the 9 o'clock show, and everyone's like, क्या बोल रहा है ये आदमी, कुछ भी crowd. हुआ है, reference हुआ है, and then I had to address, because I realized कि oh shit ये क्या हो गया, then I had to address, ये पिछले वाले show में हो गया. इसलिए मैं crowd work नहीं करता, फिर crowd work ऐसे. No, and then calling out that also becomes funny in Funny. itself. But Yeah. that's Right, what but- as comedians we have the advantage of. Yeah, but you know, I've seen sometimes, you know, when comics who are not really, like this has happened with me as well, right? When you're hosting one of the lineup shows, for example, you go out, you start chatting, right? And then no joke comes, so you're like, okay, wait, the joke will come. So you ask, okay, so where are you from? Oh, what's your name? Oh, what college? And then before you know it, तो इसे 8 चीजें पूछ लिया है, एक भी जोक नहीं आया अभी तक. वो हुआ है कभी तेरे साथ कि यार shit, अभी मैं Then you're I'm just taking a census. Yeah. No, I'm just employee asking, अच्छा फिर ये हुआ, अच्छा date of birth क्या है आपका? Okay. आधार Passport कार्ड expiry date कब है? हाँ? Okay. ऐसा कभी हुआ है that you've gone blank where you're like, अरे यार shit, joke ही नहीं आ रहा अभी, क्या बोलूं क्या हुआ है बोलूं क्या ना, बोलूं. हुआ है, especially देखो, the problem of special shooting, ठीक है, जब तक when you are doing a show, 1 hour show, and I've done so much of it, and when the pressure is not of recording, it is much different, because I can do callbacks from the show, and there is a lot of light moments, right? You don't have to have a set per se, right? Because it's going on. It can be fragmented. But when you were shooting for a special, it was a big problem. Like all the things that you were saying, we had a lot of rules that we had put in. मतलब Viswa and I spoke about. Like I didn't ask anyone's name. We didn't want anyone's name to be revealed, because some people don't realize, even though they sign a mandate form, consent form, जब वो online जाते हैं, and then the reactions, and you know how people are online. We know how to, but they don't know. So it gets really messy for them. They don't know how to handle it, right? Although they're very excited about being popular and all, but when the backlash comes, so strict data, we are not asking people's name. So no conversation started by asking someone's name, which was very difficult to incorporate after doing crowd work. So I had to practice that. Pura Europe tour mein I was practicing starting conversations without taking the name. Wo. Secondly, we were not showing them at all. Again, we didn't want people to know, because backlash, they don't know how to handle. And then it comes कि ये video निकाल दो, ये हटा दो, हमको बुरा लग रहा है, ये वो. That's a and कोई देखने नहीं वाले consent form again. Third thing was, we can't do callbacks from the same show, because हर एक location से एक set निकल के आ रहा है. So if I'm taking a conversation that I'm having with Thakur right now, since Thakur as a banker, मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, the callbacks that I do on that show, ठीक है, will not make it to the final cut. So I had to be very
cautious not to do callbacks from that show, which also limits you in terms of कि how many. So that why it was very challenging, right? Because अगर ये set यहाँ से निकला, उसका पहले वाला set नहीं आया final special में, तो वो callback का कुछ sense ही नहीं. So there were a lot of ये सब रख के had to do the special, and it took some time to get used to it. That's why we did trial shows, and having Biswa was of great help, because as a comedian who's outside now, who can actually see the struggle points and can give you like cues ki yaar, you know, this is how you approach. And that's why I was by the end of the special, I was exhausted mentally, but also extremely satisfied, because we were very happy with the different conversations. There were funnier conversations, but we couldn't put them because we wanted every conversation to be different from each other, which was more important. So yeah, so it happened. But yeah, by the end of it, I was exhausted, and I'm like, okay, done crowd work. Now it's done. Okay, let me go back to doing stand. So I'm happy कि किया वो, but अभी हो गया. तो 1.5 साल हो गया अभी I've realized crowd work is a scam. So yeah. So bro, देख show का नाम तो internet chats है, ठीक है? So इस पे we come up with random facts that we found about different topics. So first topic we look for was Rahul Subramanian, ठीक है? कि तेरे बारे में internet पे क्या क्या लिखा है. So I found this one very specific thing, okay? And that is the moment that you decided you wanted to start doing comedy. Because everybody knows, they're well aware that from 2007, 8ish, you've been in various corporate jobs at different positions, etc. But instance ये है कि 2015 में you were on your way to watch a play. 2014 में. तो ये गलत है भाई, जिसने भी लिखा है. क्या है? राहुल सुब्रमण्यम wiki.org गलत है. 2014 में. हाँ. So 2014 में you were on your way to watch a Paresh Rawal play. Where you got a message from a very big company offering you a position. हाँ, वो कबर्ड बनाते हैं वो लोग. अच्छा, कबर्ड बनाते हैं. अच्छा. उनके नाम में भगवान है. अलमीरा. So you got a call in 2014 from a very big company, और इससे तेरे को जॉब ऑफर किया. लेकिन वो टाइम पे सडनली तूने रियलाइज किया कि नहीं, मेरे को ये नहीं करना, मुझे कॉमेडी करना है. So take us through this. Take us through this very specific instance. काश ये गट्स मेरे पास होते. पर तू एक ही कंपनी में इतने टाइम से, दूसरे कंपनी से कॉल आना चाहिए. अरे है बहुत सारे आते हैं. But sorry, carry on. But he says, sir, nahi chahiye, and then he cuts the phone because it's spam. Sorry Rahul, go ahead. यार ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जिसने भी डिस्क्राइब किया. तो when I am listening to this version, it feels कुछ भी ऐसा मतलब चल रहा था. परेश रावल का प्ले देख रहा था, नहीं चाहिए यार तेरा जॉब, और बाहर गया. No, I can imagine the turmoil. So what actually happened? Yeah, बहुत लंबा से I was looking for a job change. ठीक है, because I was in corporate branding, and Neville will understand this. As a marketer, मैं जो 4 साल से corporate branding में था, तो marketing की दुनिया में corporate branding is like a scam. ऐसा मतलब वो है, थोड़ा नीचे दिखता है उसको, crowd work की तरह. तो they are like real market branding होता, product marketing करो, या फिर you work for a brand, or you go the agents, ऐसा. तो मैं तो बोला यार, और मुझे ये कंपनी से आया. I was giving interviews, 7 rounds of interview I had given, and finally I got a FMCG hair care brand का brand manager role, which was and तभी digital चालू हो रहा था, तो I was in charge of digital as well as a brand I had to take care, which was very unreal, क्योंकि मेरा कोई background नहीं था. corporate branding करके आया मैं, और e-commerce market. तो मैं बहुत खुश था. सैलरी भी बढ़ा दिया, 30% हाइक, मेरे घर से एकदम नजदीक, विक्रोली, ऑपोजिट डायरेक्शन, गाड़ी में जाके आओ आराम से. अरे और कितना क्यों देगा, समझ गया हम. विक्रोली बोल दिया मैंने, सॉरी. विक्रोली से जेबीएल लेके कहीं भी जा सकता हूँ मैं, ठीक है, तुम लोगों को नहीं बताएगा मैं, ठीक है. ऑल दैट, और कल्चर अच्छा है, लाइक महिंद्रा, आई वाज इन महिंद्रा, तो वो सब था. आई वाज अबाउट टू टेक इट, राइट. तो मैं मन में कन्विंस था, बट फिर मैं विद माय ब्रदर्स आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जिसमें आई नाउ मैं इतना बार मैंने भी ये बोल दिया है ना, तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं कितना सच है, ठीक है. तो मैं you know what you guys know what I mean. Yeah. मंडेला इफेक्ट हो रहा है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे को मेरा भाई उन्होंने पूछा मेरे को, दोनों ने, कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस. और मैं बहुत खुश था. बोला नहीं, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग इज रियल मार्केटिंग. और मेरा भाई एक्चुअली यूनिलीवर में मार्केटिंग
उसको बहुत पसंद है वो काम। तो फिर वो पूछने लगा अच्छा क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, और मैं हगने लगा, मतलब मैं जो बोल, एंड उसको लगा कि यार ये तो कुछ कुछ भी बोल रहा है, ये नहीं है देखो, आई डोंट थिंक सो यू रियली लाइक क्राउड वर्क कर रहा है क्या हम लोग के साथ? इट। तो बेसिकली कॉन्वर्सेशन से मुझे भी पता चला कि आई डोंट रियली लाइक इट, और मेरी फट गई, एंड आई वाज लाइक वेरी रेड। तो मैं, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर। तो मेरे ऐसा नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी सीधा, आई हैड लॉट ऑफ ऑप्शन। फर्स्ट आई वाज लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग, मुझे लगा क्रिएटिव फील्ड में जाना है। तो आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु शी वाज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग, एंड शी सेड राहुल तू ज्वाइन करेगा अभी इफ यू वांट टू डू क्रिएटिव कॉपी राइटिंग, बट द ओनली थिंग इज कि क्रिएटिव तो बहुत है बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो उसने बोला कुछ 750 का कुछ सैलरी से चालू करना पड़ेगा। और ब्रांड मैनेजर्स को बहुत पैसा मिलता है यार, एमबीए वालों को, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन सडनली बोला यार इतना मेहनत नहीं कर सकते मैं, पैशन ठीक है लेकिन इतना नहीं। And that's a few other options था, and then stand up was one of the things because I'd seen तन्मय का एक show first and I was impressed. मतलब मैं front row में बैठा था and तन्मय on stage he's a riot. it's unbelievable, like एक second नहीं था नहीं हंसा, and he was so comfortable on stage, and तो मेरे को देख के बहुत ही inspiring, inspirational लगा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। That's how I started doing open mics. तो but मैं बहुत clear था, it was something I'll do along with my work था। पर 2 साल किया वो, 2 साल के एंड तक I was like यार it's ये अभी थोड़े पैसे भी आ रहे हैं इसमें, I have to give it पूरा effort। Full shot. Yeah, but that's the long परेश रावल का ये परेश रावल देखने, स्पेसिफिक कौन सा क्योंकि प्ले क्या हुआ था, परेश रावल का प्ले में देखने गया था with my in-laws and the thing was कि प्ले इसलिए देखने गए थे क्योंकि जॉब लग गया था, मुझे आ गया था from that company कि you have been selected after 7, and we were so happy and we were like चलो let's celebrate। मैं बहुत खुश था उधर यार, भावा 31% हाइक मिल रहा था मुझे, can you imagine, and for a role that I wanted specifically, Yeah, I was for like sure. क्या And मैं I तो know, बहुत and I suspect I know who you were reporting to also, and that person's also pretty good. So, okay, does the and name here's start the with thing, N? no I don't remember, Oh, I don't remember because I didn't take up the job na, Because he didn't join, exactly. Yeah, No, I no, didn't they take would up, have told you who your reporting manager is, but that's fine. yeah I don't remember, but here's the thing, okay, 7 राउंड इंटरव्यू मैं बोला यही चाहिए, नहीं तो मैं नहीं लूंगा, यही चाहिए, क्योंकि मेरा महिंद्रा का जॉब वाज नॉट बैड, आई हैड अ ग्रेट टीम, मेरा बॉस अमेजिंग था, ओनली थिंग आई वाज लाइक ये प्रोफाइल मेरे लिए है क्या नहीं। उसके बाद मैंने जब ऑफर आया उस दिन रात को मैंने ऐसे ही बात किया मैं, एंड देन आई वाज लाइक नहीं मे बी दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, और मैंने ईमेल कर दिया सीधा रात को 1:30 कुछ, आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू टेक अप दिस जॉब बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू, और मैं सो गया एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अगला दिन सुबह उठा, बोला क्या क्या स्टैंड अप, क्या एडवर्टाइजिंग, कुछ पता है तेरे को। अगला दिन आया उससे, शी कॉल्ड एंड शी येल्ड एट मी द एचआर बिकॉज़ राइटली सो, look you took so much time of us, 7 इंटरव्यू तो 7 बैठा, इंटरव्यू किया है and you were very specific कि यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, and then we gave you, and now you're saying you don't know what to do, और मैं sorry ma'am, बस yeah, that was, Yeah. so तो wherever वो she is कंपनी में I'm sorry। तो वो कंपनी में कॉर्पोरेट हो गया है क्या? या कभी वो तेरे शो पे आया है क्या, एंड देन यू लाइक नहीं मैम नाउ आई नो व्हाट आई वांट टू डू। नहीं मैंने वो कंपनी में कभी कॉर्पोरेट शो नहीं किया, आई डोंट थिंक सो। हम्म, महिंद्रा में बहुत किया, आई हाँ थिंक हाँ, आई अर्नड मोर आउट ऑफ महिंद्रा एज अ कॉमेडियन देन आई वाज अ ब्रांड Then as a- मैनेजर, बट महिंद्रा हैज बीन बहुत सही। हम्म, Rahul, how many years were you in corporate India? कॉर्पोरेट इंडिया इंडिया। इस शार्क टैंक लग रहा है सर, मैं 5 साल से स्विगी में काम करती थी, but now I have been so engineering खत्म करने के बाद 2 साल I worked in a startup, and then 5 साल as a marketing slash brand manager after MBA, 7 years of cop experience in it. 7. And what is the worst 7 years thing of that real you experience. Huh. what is the worst aspect of being in it? It's if you don't enjoy it, then तो it is a horror show, ठीक है, you have to, it is a horror show, and I think it's for most professions, but corporate show mein most people end up with, like that's the place people end up with na, at least urban India mein, and when they don't like it na, you don't realize only for a long time ki why you're not enjoying it, and you always find other reasons, nahi ye boss theek nahi hai, ye company theek nahi hai, ye mera profile theek nahi hai, and you keep jumping without realizing, The but if you, source of your unhappiness is the system. yeah,
But if you love what you're doing, there are still struggles. Then the bureaucracy can hit you, which I think is changing a lot. I have no idea. मैं 10 साल हो गया अभी. I think now the जो भी corporate teams are way more flexible. They give way more weightage to mental health, personal life, personal space. So I would have, I don't know if I had that then. जबकि वो हुआ था मेरा लास्ट जॉब महिंद्रा में, मतलब ब्रांड मैनेजर जब था लास्ट 2 years, इट वाज अमेजिंग. माय बॉस एंड टीम. मैं ओपन माइक करने जाता था रात को आफ्टर महिंद्रा में, जाता था बैंड्रा तक, और अगला दिन थक के, क्योंकि मैं 12 बजे तक तब वो बैठा रहता था ओपन माइक करके, अगला दिन मैं लेट आता था. कोई मेरे को एक चीज नहीं बोलता था. नॉट माई टीम. दे यूज्ड टू बी लाइक, अरे राहुल थक गया होगा बेचारा, ओपन माइक करके आया, हाउ वाज इट, एंड इट वाज Wow, bro. सो एनकरेजिंग. That's मतलब I amazing. lucked out in that sense. But otherwise corporate shop बहुत सारे bureaucracy मैं जब था तभी, and there is कभी कभी ना वो मन में आ जाता है कि whether you are being rewarded for your merit or you have to do other stuff around your, because if So you're not politicky. good at if you're not good at networking interactions, तो वो एक बड़ा नेगेटिव होता था. Even though you're Correct. good at your job. Again, very specific to my time and with limited corporate experience and I had. तो वो बहुत But होता I like how है. you've taken your limited corporate experience, combined it with your comedy experience, and मैं देखा LinkedIn पे तेरे 9 लाख फॉलोअर है. ये क्या है सीन? ब्रो दैट्स इनसेन. तूने मतलब इधर हम लोग रील बना रहे हैं, उधर तू सीधा लिंक्डइन पे. तू लिंक्डइन से काम आता होगा लॉट, लाइक एक्स कनेक्ट्स I'm एंड. sure आता होगा. Directly नहीं आता, मतलब directly नो नहीं एज आता इन होगा लाइक बाय through योर you. प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन हैविंग. आई Yeah, डोंट नो I'm sure. एग्जैक्टली, जो मैं है नहीं लिंक्डइन पे तो मेरे को पता नहीं, नहीं बट नहीं, I'm लाइक sure आता होगा रे वरुण, because lot of corporates know me वहां से, so I'm sure some of them would go back to their HRs or no, अरे can we have him for a corporate show or can we have him for a brand. I'm sure होता रहेगा because I've been active on LinkedIn for a long time. Like No, I was active. it also gives you permissibility, right? Like when HR goes and says, "Hey, we're getting this comedian," it puts people like, "Oh, I know this guy." Yeah. So that is because like insulated universe है ना. तो अगर तू एडवर्टाइजिंग में, तो तू सिर्फ एडवर्टाइजिंग के बारे में जानता है. अगर तू बैंकर है तो तेरे को सिर्फ बैंकिंग के बारे में मालूम है. अगर तू सो आई मीन इट्स अ वेरी लाइक insulated world. You're almost constantly obsessed with that only. Yeah. Outside of that, no one cares about what it is. So you're not making an impact in that, in the sense that you Yeah. that you read about or that you But- went into the profession with. But But Rahul, since you're I on... play मतलब हाँ, sorry, go on. No, go for it. Finish. No, I was just saying कि because for me in LinkedIn it didn't start off. It was not a strategy. Like now there are people who are doing analysis of why I'm on LinkedIn. There are posts saying Yeah, Rahul dude. is on LinkedIn, which is just like, it's just like so much fun. LinkedIn is very adorable रे. मैं क्या बोल, LinkedIn में जब जिसको एक तो ऑफेंस भी क्या क्यूट होता है. ट्विटर की जैसा नहीं, तेरे Yeah. माँ को तेरे यहाँ पर वो घुसा, कुछ घुसाते नहीं है, मम्मी को नहीं. वो लोग सब बोलते हैं कि तुम जो ऐसा, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू टू. ऐसा है इनका क्या, तो गाल पकड़ के खींचने का मन करता. लिंक्डइन क्यूट है. But मैं also जब they क्या can't उधर say तू जोक्स वोक्स करता है क्या कुछ? और उधर क्या, is- मैं he मोटिवेशनल थोड़ी बात he does one Yeah, liners. exactly. No, I mean not motivational, but उधर I don't know, bro. I'm not on LinkedIn. I've never been. So when तो मैं if you had to harness your comedy in LinkedIn, how is it? Like उधर तू क्या ऐसे अपना tweet तो जैसे, मेरा is it अरे microblogging? वो अपना यही सब status करता है. update? In life, you early bird wakes up every morning and decides to drink chai. ऐसा सब है रे, उसका और कुछ नहीं है. हाँ, मतलब the spirit of the statement is right, not exactly the but yeah, Yeah. Neville is right in terms of That's this an is awful joke. yeah. Yeah. So, I mean, Say it that's again, so bro. bad. he'll do that only ना, like ऐसा वो No, walk पे he's जाता right. है, ऐसा सब यही है. Early bird wakes up and has chai. Yeah, he'll Very write motivating. like, you know, मैं आज walk 11 पे things 11 things billionaires do. और वो 11 things में से ऐसा कुछ दो रहेगा, they drink tea, give टपली, ऐसा सब. No, but Rahul, I've told you this many a times. All your this thing that you started, question which is answers. question answers. I think तेरा एक Yeah. section of तेरा fan base है जो सिर्फ वहां से आया तेरे शो भी देखने के लिए. I feel because it is I'm sure. so funny. It's too funny. तो ये ऐसे कैसे suddenly एक दिन बोला कि चल ये करता. How did you? It was that funny. बहुत I don't know how- तुम लोग यहाँ पर जो भी है सबको ये रिलेटेबल होगा as to how they started, because I know all of you and you're very similar to me in that. देखो इंस्टाग्राम में तब था कि एक्टिव रहना है,
क्योंकि बहुत अगर तो मैं तो AMA वैसे मैं संडे AMA तो इसीलिए स्टार्ट किया था मैं, और क्या वो इट्स हाँ, but इजीएस्ट विदाउट पुटिंग आउट कंटेंट, जस्ट गिव ज्ञान. yes, exactly. Neville again as I couldn't have put it better. मुझे ऐसा वीडियो नहीं बनाने का, एडिट नहीं का, कुछ नहीं. मैं सोच रहा आई वांटेड टू, in fact I was also doing क्या बोलता है, नहीं ये क्राउड वर्क के पहले ही चालू किया था. I just wanted to have put up things with least effort in terms of production, and ये था, and that's it. And then वही करते गया. But हाँ, LinkedIn का story है. I was, so for me, I was on Twitter. I used to put one-liner jokes for a long time. ठीक है, तो मेरे को पहले फेसबुक में डालता था, फेसबुक मर गया ऑलमोस्ट. Yes, cross promotion. हाँ, तो फिर ट्विटर में डालने का चालू किया. एंड द थिंग इज फॉर मी इट वाज एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे लिए, ताकि एवरी डे आई हैव टू राइट सम वन लाइन, सम जोक्स, सो दैट आई एम इन द ग्रूव ऑफ जस्ट थिंकिंग फनी. अच्छा बुरा का बने डालो बस. तो जब, एंड ट्विटर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई कुडंट हैंडल इट. आई एंड वरुण वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. जेन्युइनली मुझे नहीं चाहिए था ट्विटर, लाइफ में नहीं चाहिए था, बिकॉज इट वाज टू टैक्सिंग फॉर मी, एग्जॉस्टिंग, एंड जरूरत ही नहीं है इतना नेगेटिविटी का. सो आई वेंट ऑफ ट्विटर एंड आई वाज लाइक कहाँ करूं अभी, कहीं तो मेरे को जोक डालना है. एंड दैट इज व्हेन मेरा एक दोस्त है जो लिंक्डइन में काम करता था, उसको मैं मिला. बोले तो लिंक्डइन में क्यों नहीं जोक्स डालते? बोले लिंक्डइन में कौन जोक्स डालते हैं, लिंक्डइन में जॉब डालते. बोलता नहीं डाल सकते. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट्स आल्सो अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. एंड देन आई स्टार्ट पुटिंग आउट, बट आई शुड पुट इनिशियल जोक्स, इनिशियल ये सब, करियर एडवाइस, क्विट, इतना ही डालता था. और बाकी लोग 15 पैराग्राफ लिखते थे अबाउट आवर लाइफ एंड ऑल. मैं ऐसी सब चीजें डालते थे. I want to, in fact, talk about So, that aspect of LinkedIn, right? So there is, by the way, there's one whole subreddit called LinkedIn Lunatics, where they take screenshots of these people who do motivational gyan. You know, that kind of like, today I was talking to my 5-year-old and they said, "Mom, the गागा universe." गुगा. No, exactly. It But should have that is been what that. Rahul will write. That's what Rahul will write. These people are writing this sincere. My 5-year-old told me, "Love is but a summer's day." I was like, yeah. तेरा 5-year-old विलियम शेक्सपियर है क्या? So LinkedIn Lunatics. The second thing is that there is jargon, right? And what I wanted to do was, I've found a bunch of these jargons on the internet. Wanted to ask you if you know them and what they could mean if you don't Can know I them. also partake? Of course, Yes. everyone should. Everyone should. Okay. No, yeah, it's two guys who have corporate experience and me. By the way, fun fact before we start this, my highest performing reel has been a reel where I talk about how corporate jargons that are used. Okay, me never been inside a corporate PDF. setup. हाँ वही है EOD, TTYL. और मेरा एंड क्या है उसमें? सर आई जस्ट विश यू कुड FUCKOFF. ठीक है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन. Nice. But So yeah, so हाँ. one is this acronym EOD and all of this thing, right? Then the second is these phrases. Phrases. Yeah. So here are some of these phrases. Okay, so I'm going to start with this. Do you guys know what is boiling the ocean? They're all It's, amazing. can you give me the origin? Can you give me the origin? Can you use it in a sentence? It's a climate change. I can just imagine a boss in like a boardroom, guys. You're boiling the ocean. और सब ऐसे public बैठे कि ये क्या बोल रहे हैं मेरा? I have two options. Can I go? Go. एक मिनट ना, पहले बात तो मैं हाँ, I'm not guessing. मैं जो ये एक तो ये I think ये नए वाले तो Yes. Yeah. ये सब वही होगा ना कि let's get into a breakout room and then circle back to the problem. ऐसे सब रहेगा ना. तो circle back चल रहा है बहुत टाइम से. Circle back is circle बहुत पहले आया था भाई. The newest one, which I fucking hate, and I'll answer your question. I hate it with a vengeance. Is, oh my god, it boils my ocean. That's how irritating it is. It is. Let's double click into that. Motherfuck. What? Who said oh that? Oh my god, I want to. It was in my list. It was in my list. Double click. What is it? Let's it means to explore, like go into, basically, like, Varun, link. you and I are having a conversation and we're like, okay, so there are several factors that are affecting the sales of this, blah, blah, blah. So let's look at environmental factors. As we double click into environmental factors, we will see, oh my lord, तू बात करते करते डबल क्लिक करके अंदर क्यों जा रहा है भाई? तू बोल रहा भी है डबल क्लिक? नहीं, बट तू डबल क्लिक नहीं कर रहा है. तू डबल क्लिक नहीं कर रहा है. तू डिस्कशन में बोल रहा है. When you double click is a phrase to get. क्यों भाई? Let's right click open.
into that. ऐसा नहीं है. So, let's save as PDF. So, Into that. Kautuk, I feel boiling the ocean, boiling the ocean, right? That's what it is. Boiling the ocean. It could be one of two things. One is let's I will also take a guess. Huh? let us brainstorm, or let us spend more time on this idea. That's option Okay. one. Option two is that let us, because you've said boiling and not boil the ocean, but boiling the ocean Boiling the ocean. could be that you are going to say something or create something that is going to change the way the game is played in some way. Okay. Okay. Rahul? Rahul मेरा बोले. answer is very similar to Surte. Boiling the ocean, मतलब let's shake the industry Shake things up. guys. Let's shake things up. Huh? Shake the Okay. industry up, not just ऐसा. I have a different thing. I think that ये आदमी हग रहा है, ठीक है, और जो वो प्रेजेंट कर रहा है वो बराबर नहीं है, तो उसका बॉस को बोले चूतिया तू क्या तू ओशन को बॉईल नहीं कर सकता वैसे. Don't try boiling the ocean. I thought it's the other way. Oh, Okay, nice. so- The Nice. idea in the larger scheme of things is quite fucking stupid. So like, I don't So know. okay, so basically you're Let's saying do something impossible. It could be that also. I don't know. it is that. It is that. Okay. So basically, boiling the ocean is an impossibility. So this is business speak for taking on an impossible or unnecessarily difficult project, and it's usually considered like a negative thing. Yes, yes. I It's think not you like, can hey use. I guys, think it's you can impossible, use. but let's boil the ocean. It's not that. It's No. like I think you don't can boil the use me also. What I said also. That is हाँ, something simple. impossible कि चचा बैठ जाओ तुम ocean को boil No, no, करो. ये but नहीं it is होगा. that only. What you said, Thakur. It is what you said. Thakur, what you said. Don't boil the ocean. Yes. Boil the lake. Okay. Next up, we have quick flag. Quick. Quick flag. Offside. Goes to VAR. Do you have it in a sentence at all, or what? No. मत मजाक करता मत. हाँ, हाँ, नहीं, तू नहीं. guess कैसे करेगा? तेरे को सब platter पे चाहिए क्या? हाँ. You want it on the platter? Yeah. Let's boil the ocean, yaar. Come on. And serve it on the platter. क्या था? Quick What was it? flag. Quick Quick flag. flag. Quick flag. Okay, it's like, can I go for it? Yeah, go for it. Go for it. It's like an obvious hurdle that you missed out on. Oh, Guys, that's Okay. there's a quick flag here. We can't sell water heaters, In the ocean. someplace. Yeah. it's In the it's an boiling ocean. urgent red flag, is what you're saying, Rahul. Yeah. It's quick. It's one of the easiest obstacle to note. अरे ये Quick flag. You missed the quick flag. तू क्या कर रहा है तू? Thakur, Like, I Neville? think it's a quick चेन्नई start. में- कि चल इसको फटाफट start कर दे. फटाफट start कर दे. Okay. हाँ. So quick I feel- hurdle, quick start, and Baba. I feel that it is, say, when someone wants to interrupt someone or something, it'll be almost like, let me just raise a flag quickly here and say that this is what I want to say, and then bounce, right? Like that. Baba is the closest, and possibly it is right, because what Baba said is basically quick flag is they either want to raise something important or that's potentially an issue. So it's a tie between Rahul and Neville. Nice. Well done. Okay. Next one. Are you ready? It's too much fun. This is a little risky, okay? Oh, And mildly racist, quite possibly. oh shit. Ready? हाँ, It is- बोल. Open the kimono. I want to go. Yes. Well, it's more like stop beating around the bush and be transparent. That's my guess. Yeah. Yeah, that sounds good. Now, think of the answer. Kautuk, Hold on. Kautuk, don't make us wait. Just open the kimono and tell us what Wait, it I'll means. tell you. I think opening the दुकान खोलने के पहले. कूजा रहा है, देखना, daydream कर रहा है बाबा. बाबा सीधा किमोनो में imagine करा रे किमोनो. No. I'm trying to think of. तुम I'm trying to think of what would kimono mean. Like, is it okay? Here's my answer. Is opening the kimono is that it is basically trying to say that just let's get this over with. Like, tell us what it is. Okay. wait, No, quick so flag. I think open the kimono means देख मेरे accounts देख ले.
No, but Thakur, you will not believe you gave the answer, but I तू did? मस्ती में बोल दिया. तू मस्ती में बोल दिया. तू बोला, okay, now quickly open the kimono and tell us the answer. It is Ah. literally Oh. revealing information. Ah. Oh, but that's what I Hey, said. Don't make us wait. मेरा भी मेरा काफी भी same ही correct था. ही है. Yeah. देख बाबा, हाँ? we didn't take you seriously क्योंकि ऐसे खुजली करते करते ऊपर मैंने नीचे तो वही नीचे बोला बोल था रहा है. कि हाँ, okay, चलो next. रिवील बकवास बंद करो, रिवील फैक्ट्स. मेरा भी Last, same. last. Okay, now the next two are both uh, In they are Marathi. both pet. No, they are pet related. Okay, they are pet related. So the first one is herding cats. तू प्रोजेक्ट Okay. मैनेजर है यार, तू मेन मैनेजर है मैं और बोलूं. तेरे हाँ. पंटर लोग तेरे साथ तो हमेशा लेके घूमते, तेरा लिटिल क्लैन है ऑफिस में वैसा. ठीक है. Okay, मैं बोलूं. your clan. हाँ. You're building a customer base which is not loyal. Oh, very good interpretation. Bro, what Great a interpretation. brand manager response. ये प्रॉपर पढ़ाई करके आंसर No, no, that is. They are that is not so- loyal. Interesting. Okay. That's what insight. No, but it's almost like this They're not task is grateful like- क्योंकि बिल्ली. this task is like herding cats would mean that there is it's going to be difficult because there are people spread all over the place and you can't get them into one bucket, into one. You can't get them in the same direction. You can't get them going in the same They're direction. working in silos. They are, so Neville is, I think, the closest to this. So basically, herding cats or cat herders are basically people in the corporate world. Are those people who can organize different people to come together and complete a difficult task, despite having Oh. conflicting views. Very nice. So they are cat herders. But I really like I really Rahul's like Rahul's interpretation of it. explanation, Yeah, I yeah. think that's also very good. I think we should Okay. just change it to that. Okay, last one. Are you ready? This again is related to pets, and it is simply just dog food. What do you think dog food means? And it has like a little, like a story behind it. Wow. That's it, dog food. Yeah, dog food. It is. It's going to be difficult to guess. It's going to be difficult. Let me say that. It's going to be the hardest one to guess. Okay, so in that case, can you just use it in somewhat of a sentence? Then how is it difficult to No, yes. deduct? Okay, what I could tell you is that it's what clue do I give you? Like dog food means maybe something that is not tasty, because I'm assuming it's coming from the It point has of it view has of a something to do. human. Okay. It has Like something a- to do with new products. Chal, let me tell you that. Okay, got it. My suspicion was yeah. this. Got it. My sus was that, but okay. The thing is, when you take waste from one product line and then Ooh. build a second product line out of that waste, and sometimes that tends to become successful or even more successful than the original. And there is an example of this, I think, got to do with a frozen foods company that started to do some. No, okay, so then maybe that's not. No. Go ahead. I was saying go ahead. Yeah. So to me, dog food is that basically start something with a waste. I think that's correct. देखो point देखो बाबा को यही है. I think I may be wrong. That's a beautiful Wrong answer. Yeah, this thing on it, but it's not true. It's not. Oh. Your answer But is dog food. good spin on it. हाँ. Nice. तो dog Good food का भी interpretation. है ना हाँ. मैं और it's Varun between me and you, bro. Yeah. Sorry. New products. Is तू it like कितने का भी Okay, बेच, पब्लिक okay. खरीदेगी क्योंकि पब्लिक अपने कुत्तों के लिए कुछ भी करती है. नहीं. Interesting. I think it's Interesting, but not- okay. I think it's a new product launch wherein the target audience is not the consumer but the owner, but someone else. Like Pester Right. power, like kids? Guys, all of these are outstanding interpretations. And I have to say that it's not fair to you guys because it's a little tricky one, okay? But all of these are outstanding things. The answer is that
here's what happened. Okay, so legend has it that back in the 1980s, a Microsoft executive sends a message to his co-worker before the launch of a new product. In this message, he writes, "We are going to have to eat our own dog food and test the product ourselves." So dog fooding was testing your own product on yourselves Okay. to see whether it's good, bad, whatever. Damn it. And it may not be pleasant but it's very difficult. This one was truly tough, but mast, majedar. And my last Well one was going to done. be double click, but we've already double clicked on it. So no need Well to done. open the Well kimono done. on that one. It was very interesting. This was fun, Kautuk. I think Must, yeah. I think all our dog fooding examples were better than reality. I agree. I think all of them. So I think if you're working in a corporate and you're watching this, you have these existing jargons, but you have new interpretations. Can I Use tell you it. something? Can I tell you something great? And Subbu, you will relate to this. Your brother might know about it. That when you on the onboarding kit of HUL, which is a 3-letter abbreviation for Hindustan Unilever Limited, they actually give you, I don't know if there's a physical copy or anything anymore, but at one point they used to give you a book that was called TLAs that the company used. Okay. And TLAs stood for 3-letter abbreviations. Wow, nice. Nice. By the way, just for nostalgia's sake, okay, so there was this thing I found on blog.hubspot.com. Okay, a list of jargons just for nostalgia's sake. Okay, just see if how many you've come across. It is what it is. Yeah. Win-win. Yeah. Yes. Yeah. Content is king. Yes. Yes. Move the tired of hearing goalpost. that. Yes. Move the there goalpost. used to be Hey, this argument of I have, sorry. Go for it. within the media and between advertising and media, there used to be this conversation that used to constantly happen, which was content may be king, but distribution pays the king's mortgage. Oh. And then you saw that line in Studio 60. So it was like, whoa, that's where it came from, like that. Like, मेरे को लगता है every level of this interaction is coming up with अरे एक बोल रहा है content is king, दूसरा बोल रहा है no, but this pays for the kings, this तीसरा के बोल रहा है no, but actually the king's real estate is the most important because where the fuck will the king stay? correct. And in all of this, the king is actually naked. Okay, Kautuk, guys, let me share something. Because we spoke about it. One of my first viral posts on LinkedIn is me making interpretations of jargons. And 2017, I'm just going to share it with you, Kautuk, for your... अगर ये पोस्ट में by chance भी after this podcast 5,000 likes बढ़ा, then I will be like tis follower forever. मान लिया टिस को. But this is just me 1000 follower तेरा बढ़ा तू ये बोल नहीं, ये 1000 likes बढ़ा तो ये पोस्ट स्क्रीनशॉट आराम से. हाँ अच्छा टिस आर्मी ये हफ्ते का होमवर्क है कि आपको राहुल के लिंक्डइन अकाउंट पे जाना है, बनाना पड़ेगा. बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसके प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा और ये वो जो ढूंढना पड़ेगा, ये पोस्ट ढूंढना पड़ेगा 2017 में where you have given meanings of किया मैंने one of the 4 pinned posts है. सब pinned पिन post पोस्ट मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर PFA PDF EOD चल बोल. Boys, have you heard of ducks in a row? Yeah, shooting. get your ducks in a row. Get your ducks in a row. This comes from bowling, by the way, where people used to put their pins in a row before knocking them out. Game changer. But ducks in a row just means that क्या duck hunting कर रहा है? हाँ तू मतलब easy targets है. सुबह तू बोल. हाँ, the one jargon that I don't like and it's used so much in Indian context corporate is they say, yeah, that's a curve ball. तुम बेसबॉल नहीं खेलते हो, तुम गुगली बोलो यार, तुम कर्व क्यों बोल रहे हो? या इन स्विंगिंग यॉर्कर बोलो तुम. हाँ, तो क्रशिंग यॉर्कर, कर्व बॉल मेरे को इतना गुस्सा आता है यार. और वो भी ऐसे लोग यार, तुमने कभी देखा नहीं? दैट्स अ कर्व बॉल. कहीं तो उनका कोई क्लाइंट बोला रहेगा यूएस से. हाँ, यूएस से ब्लेजर पहन के चाट के साला. Anyway, sorry. Yeah, no, so these are just like 2-3 more of these are basically low hanging fruit, do more with less. Yeah. Ping me. Oh fuck, ping me. Bro, same एक हम लोग ने
रेड बुल के लिए 2012 या कभी वीडियो किया था, उसमें भी यही सब था अबाउट सर्किल बैक, how you are in a corporate thing that has become such a recurring sort of joke. तेरे पास corporate के लिए ये सब छोड़ के अलावा कुछ, मतलब even a person who's not in a corporate thing thinks of corporate life But like that. How the question I want to ask both Neville and Subbu is, why do these jargons take place within this corporate environment? Like, what is it and about? how often do you all actually use it, or is it just like us as an outsider? Oh, EODT, PDF, PPA, ये जो भी सब चल रहा है, we think that's what corporate life is, that people actually just go around I talking think like there's that. I think there's two sets. I think there's two sets. There's two universe. Like EOD, for example, is truly a shortcut that's great on WhatsApp, right? Yes. Email also. Like on Yeah. WhatsApp, you're just saying, "हाँ EOD तक भेजता हूँ यार." But if I'm doing a voice note, I'll never say EOD तक भेजता हूँ. Like, I mean, if I'm doing a voice note, I'll be like, हाँ रात को भेजता हूँ यार. So there is a universe of people that use it practically and pragmatically, where very few people think. Then there is an entire populace, which is the majority of it, that I have come across, and I'm very happy to say this, that they will use it to make it seem like they have a grasp on things. It's almost one of those, like, 10 power trips that you can do and all of that. So then you're starting to speak a little more eloquently in the meeting, and then you're saying that, because at the end of the day, whatever it is a metaphor, right? Or an analogy for whatever it is that you want to say. And so it just makes you sound a lot Smarter more. than you are. Like, if you drop a synergy, then it seems like you know what you're saying. Is that what you're No, saying? but like a lot of these acronyms, if you dropped when they were invented, cool, I get that. But do people still use it? Like now it's like a joke. Like they won't use it in regular conversation. Like, Not, give me an yeah. example. Like any of this, bro. Get back to the drawing board. Yeah, नहीं use होता है Yeah. normal conversation में. होता है वरुण. Back to the Normal drawing- conversation. मतलब Back to normal the- conversation, corporate conversation में होता है. So, ऐसा to be- real. तू सब्जी वाले को नहीं बोलेगा ये आलू कितना I mean, खराब है. sabzi Go wale get bhi, back to your but in drawing board the सब. in Yeah. no, in- what I'm trying in- to say is, yeah, it's a I'll blank- circle back to you. Something like that, Circle. right? तो No, अभी blank अभी slate भी मीटिंग खत्म करके we'll circle back on this, बोलता है कि I've heard this recently. circle Yeah. back and all people Yeah. will say. But there's a type Dude. of people that will say it. Okay, here's But what. I'll tell you something. When I sorry. No, go for it. Rahul. नहीं मैं जब corporate, I don't know where it came from or what, but whatever Neville said, no, it used to be true. In that, I remember feeling, if I can use more jargons in communication in meetings, it made me feel कि I am like मेरा एक status बढ़ता था, या फिर I'm like it was like it was a sign of you how much you have grasped a subject or how confident you are. So it was more of a statement type stuff. And now when I'm off it sounds ridiculous. अरे तू अभी तो नहीं बोलेगा ना कभी. नहीं बोलेगा, बट तभी हाँ, बोलता था. तभी एंड बोलता वो दुनिया में है ना, इट इज नॉट फनी. तेरे को जो Yeah. लगता है बाहर Hmm. फनी है, बाहर नहीं वाला नहीं, मैं तो मॉक करता है भाई इसको. मैं But तो तू अभी तू मैं तू creative है. नहीं है ना, तू 1% एम्प्लॉई है ना, 1% Yes, yes. एम्प्लॉइज में है ना, तो यू आर No, नॉट. but I'm saying, if you look at it, there is but for example, blank slate, those kind of things which are true to what my thing would be. I'm like, fuck guys, we really have nothing. Blank slate, let's go. One of those is something that I may be guilty of. But that's what Subbu is saying, right? It's not funny for them. For them, it's You know, my this thing on it is, I feel like every culture generates its own terms, and you need to Yeah. learn them to fit within it. Yeah, correct. So, for That's- example, like I remember when I was coming up through the open mic ranks, right? You had to learn things like, oh, he killed, oh, he Correct. bombed, oh, destroyed. light dikha Five. de, right? Oh, Like, he's a hack. tight five. yes, Hey, it's tight hacky. five. You had to know these things just to be like, oh, I'm part of the culture now, right? Or like, for example, Yeah. Bawa says this a lot, where when he's directing, he'll say, "Ek paisa idhar ghum, ek हाँ. like, वो shooting और film James- set jargon. नहीं, मुझे याद है कि मैं जब my first job as a brand e-commerce marketing करता था, वहाँ the CEO, when he used to speak, we were all in awe. एक तो command over language and the top, मतलब even knowledge of the field high था, but also the kind of jargons he used to use, and he used to always use things that we have never heard of, and we used to start using it afterwards because we wanted, at somewhere you wanted to sound like
him. तो ये बहुत है. It's not just that you sound cool, but you also look up to people who are using it. who are using it, who are using new terms all the time, and you're like, है ना, तू भी cool बनने के लिए. हाँ, तो यही सब चीज मैं बोल रहा हूँ. If you're not enjoying your work, तो ये सब चीजें तो कुछ भी है. But if you love your work ना, and really, this is like a hindrance. This takes you away from your core skill sets, and you have to focus on these things to also like stand out or ye. That is, I think, is a problem in the corporate world. At least when I was there, hopefully things have changed much more. Yeah, no, more people. Still think people are saying all of this. No? Bang for your buck. let's. Yeah, but that cannot be a metric of your success. Even if it plays a slight part in how well your presentation went or how well your sales pitch went, because you spoke these terms rather than how knowledgeable or how convincing you were about the product. Yeah, jo bhi hai. Anyway. Yeah. Also, I have these basically just found these things to just discuss, have a laugh about it. Like these are truly bizarre ways that people have gotten fired from their jobs. Okay. And if you ever, if you remember any anecdote, before that, one thing I want. Then Neville, you're not allowed to answer. This is for Kautuk and Varun. Okay. Okay. When you say, suppose you're in a meeting, okay, what's the fancy corporate way of saying, I want to go and use the washroom, or let's take a toilet break? What is a fancy way of saying? What's a corporate way? Yeah. What is a corporate way? Fuck, even I don't know this. मैं तो बोलता मैं मुद के आ रहा हूँ. तू बहुत अलग है रे. नेविल, तू नोटिस नहीं करता जब तू ऑफिस में रहता है लोग तेरे को ऐसा थोड़ा अलग सा देखते हैं. तो लगता है मुद के आ रहा हूँ. That just sounds like you say that and then you just go to a wall to do it. You know what I mean? Because I'll use the washroom, just tells you that, hey, this person is going to go to a toilet. He's going to do it. But it's not washroom. दीवार पे झाड़ में. Even I'm wondering what is the right. मुद के आ रहा हूँ is also very specific. मैं टॉयलेट में कुछ भी कर सकते हैं, but Baba has told exactly. हाँ, तो टॉयलेट में. हाँ, मुद के आ रहा हूँ, हग के आ रहा हूँ is what it is. It will also tell you how long it's going to take. I forgot कि हग के भी आ सकते हैं. हग के आ रहा. और उसके बाद अगर थोड़ी उल्टी आएगी तो वो भी कर लूंगा, फिर डकार भी मार दूंगा और एक पात के भी आता हूँ. What is a But you can be like, मैं मुद के भी आ रहा हूँ और फिर हाथ धो के भी आऊंगा. Then तो डाउट से एलिमिनेट कर सकते लोगों को. तू सब बता रहे क्या? 20 सेकंड साबुन से. It's not Rahul. Let's take 5, no? It's not that, No, right? Rahul, is it let's pour some water and come back. No. Okay, I'll tell it to you. It's very tough to guess. Let's go fill the ocean. You will boil later. Is it? No. Can I go to fill the ocean? Fuck, even I don't know. Fill the ocean is great. Okay, guys. If you are watching this and if you have not read the post that I've done in September 2017 on LinkedIn called 21 Corporate Jargons Decoded, this is on number 20 and it's called Let's Take a Bio Break. Let's take a bio break. ये सुना है मैंने. ये सुना है मैं. Bio break. Let's take a bio break. Yeah. Wow. Shoot actually कितना use होता है. हाँ. But shoot पे तो बहुत सिंपल है ना. 10-1. क्या सिंपल है bro. सबसे सिंपल ये हुआ करता था. Yes. Excuse me, sir. 10-1. उससे भी बेटर था. अरे रमेश किधर है? रमेश सर जाने दो नहीं तो निकल जाएगा. Euphemisms. Okay. Now, so Rahul, these are some of the ways that people have gotten fired. Okay, it's just outstanding and amazing. Okay, and if you can think of any stories, anecdotes that you have come across. बोलना है, तेरा voice बहुत pleasant है रे. अरे बहुत मस्त है. पब्लिक पागल होती है. Pleasant है. जिस तरीके से बात करता है, जो नरेट करता है, बहुत मस्त है. सेकंड हैंड स्टोरीज देखता है कि नहीं तू राहुल? Very sweet. नहीं देखा नहीं है, पर देखूंगा, जरूर देखूंगा. हाँ बोलूंगा. It's basically, if you like this voice, there's a lot more of it. Okay, so अपना में वो डायलॉग है ना. अरे वैसे तुम्हारे भी कंपनी का कर्जा है बहुत. हाँ देखूंगा, फाइनेंस देखूंगा, बुक्स देखूंगा. Okay, so let's start with this one. All right, this is a person who got fired for being too pretty. Oh wow.
And that company would have been sued. So it was. So basically, Yeah. here's what happened. Okay, a woman in the US worked worked as a dental assistant for this dentist. But she was fired from the job when her boss's wife came in, saw her, deemed her too pretty, and then told the boss to fire her. The boss fired her, and of course, she went and sued the company. Except the court ruled in the boss's favor. Oh shit. कि नहीं नहीं आप बहुत pretty जज हो. का बीवी ने बोला जज को The judge only heard his judgment कि नहीं यार you are too. Judge was disturbed. Oh shit. मेरे को लगा She दूसरा keeps रीजन going होगा higher up the pecking order. अरे कोई तो justice नहीं, you're too pretty. उसका दांत इतना परफेक्ट था कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे थे पेशेंट्स के वो That's डेंटिस्ट से hilarious कि जज की वाइफ ने बोला. Okay. Now this person was fired for talking badly about his boss, and this was found out through a pocket dial. Oh. नाइस Worst case scenario. तो बेसिकली पॉकेट डायल लगा बॉस को, बॉस ने फोन उठाया और ये बिच कर रहा है बॉस के बारे में पॉकेट डायल पे. मतलब imagine the fact that बट डायल हो गया मतलब बॉस वाज लास्ट कॉल. ठीक है, इतना बात करके फ्रस्ट्रेट होकर उसने जस्ट रखा होगा और सारा ये कुत्ता एक नंबर का ये चल रहा है. ब्रो तेरे साथ हुआ है कभी जब भी तू कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल पे तेरा वो सेट पे क्लाइंट है जो भी, और पूरा बात किया तू एंड ओके या यू कैन ड्रॉप ऑफ, client is supposed to drop off but you didn't do the thing where you just look, hey, now from 3 is it only 2? And then you have started, arey fuck this, fuck that, arey balls to this, balls to that, and suddenly you look and they're still on. मेरे साथ 2 बार हुआ है ब्रो. 2 बार. 2 बार, एक बार नहीं 2 बार हुआ. मैं फट गया. आउच Bro, but there is always that moment. इसलिए मेरे को सडनली 2 ब्रांड प्रोजेक्ट मिला था बीच में कि वरुण कुड नॉट अच्छा लगा था मेरे को ये मॉडल क्योंकि मैं रुकता है, मैं चेक करता है. इनफैक्ट मैं बोलता हूँ मैनेजर को बोलता हूँ डिस्कनेक्ट करो, दूसरा मीटिंग दो और फिर हम लोग. Yes, Yeah, like this always happens with me where if you're on a con call, someone drops off. There's always that one question that is asked. चला गया ना? हाँ चला गया. Then everyone checks. Yeah, always then lock the gates before you strip your clothes. ये एक jargon मैंने बनाया अभी. lock the gates. But you know what, ये corporates में ना ऑफसाइट होता है ना, ऑफसाइट में बहुत होता है. ऑफसाइट में क्योंकि लोग इतना फ्री का दारू पीते हैं और इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है, बट वो एक दिन खुल जाता है. एंड दारू पीने के बाद रात को इतने लोगों ने ऐसे, बिकॉज यार इनहिबिशन ही नहीं है, बॉस को पकड़ के आपका प्रॉब्लम क्या है मैं तेरे को सुनाता हूँ ऐसे. Holy. It's crazy the kind लोग प्रपोज कर देते किसी को भी, for a कुछ भी teetotaler, करते हैं. for a teetotaler, offsites are either very strenuous or very fun. Okay, it's strenuous. It's fun when obviously you're just watching somebody else say something to their boss like कान के नीचे बजाए, सब चल रहा है, ठीक है. बट लेकिन ये कॉर्पोरेट ऑफ साइट्स का सीन ब्रो, लाइक आई समटाइम्स नो बिकॉज़ वी ऑल परफॉर्म देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, एंड यू हैव टू जस्ट बी ऑन स्टेज व्हाट हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 आवर, बट दीस गाइस आई फील सो बैड कि अगर तू उन लोग को ऐसे भी 18 घंटा 16 घंटा काम करा रहा है कि काम से निकलते वक्त भी कॉल आ रहे हैं, ईमेल कर, रिस्पॉन्ड कर, ये कर वो कर, देन यू टेक देम आउट फॉर 2 days, okay, to some fancy place. Isn't it better to just let them have fun because they don't let them have fun? Can I tell you what is better than that? No, but who is letting them have fun? The people who are letting them have fun are also having fun, ना. तेरा बॉस भी दारू पी रहे हैं, कैरियोके में गा रहे हैं वही गाना. No, when I'm saying letting them have fun as in over a course of 2 days, if you take them for an offsite, उन लोग उसमें भी बैठ के 50 चीज कराते हैं कि अच्छा फ्यूचर प्रोजेक्शन, न्यू आइडियाज, टीम बिल्डिंग, सब बैठ के 2 ढोल बजा रहे हैं, ड्रम सर्कल कर रहे हैं. Here is the thing, there was a stat where people, anonymous survey across some 28 offices across blah blah blah, all of this jazz, where people were like, should we have offsites? And most, if you say yes, no, whatever, there was a reason or whatever, most thing answer was absolutely not. Instead, give us the 2 days off / and give us the money that you're spending on the offsite. So for example, if you are spending 20 lakhs on the offsite, you have whatever
200 people, you give us 1,000 rupees per person and say, here's $1,000 and fucking whatever, 2 days off. We will be happier than you taking us to an offsite and making us work and forcibly. It's a great idea. But most companies में offsite क्यों होता है पता है वरुण? It's not that कि offsite is not considered जाके मजा करो. Offsite का एक agenda होता है, only then the budget gets driven. The agenda has to be like we will take a stock of what how is last year happening, was. वो सब होता है. And then ये लोग गुस्साते हैं कि चलो दारू भी पी लेते हैं, मजा भी कर लेते हैं. काफी No, जगह they में have that rewards and recognition night and this and जिसमें that. सबको अवार्ड मिलते हैं. सबको जो है अरे सबको bro, अवार्ड मिलते हैं. कोई मतलब फिल्म फेयर में तेरे को शायद नहीं मिले, लेकिन तेरे को इधर मिल जाएगा. यूजुअली फिल्म फेयर वहां पर भी तुम लोग को मिला बेस्ट पॉडकास्ट, तुम थे नहीं. Dude, but this ये team building के नाम पे there's some bizarre things that these employees have to go through, where they will just lay out hot coal and they'll be like, okay, now everyone one by one start Nobody walking. does this. So I'm telling you, I have seen this. I've seen so many of these offsites. Yeah, I know this. ये कोल वाला है, मतलब obviously you're not forced to do it. तो करना है तो तू कर. एक है मार्शमेलो को टूथपिक के साथ सब मिलके बैलेंस कर रहे हैं, तो कितना टाइम तक चलेगा? 50 लोग के बीच में ड्रम सर्कल चालू है. पब्लिक वो परफॉर्मेंस करते हैं, सब लोग ऊपर जाके कोई अच्छा मेहता जी गाना गाएंगे, कोई आके ये भी कर रहे हैं. Dude, I've seen them have full fledged, मतलब तेरा अवार्ड शो टाइप सीन चल रहा है, और उन लोग के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स ऐसे से घूम रहे हैं. रिलैक्स ब्रो, तू कंपनी स्टील पाइप बेच रही है, मतलब तू ये क्या? There's also that now where they do this one thing where they're like to build cohesion and all that, we'll do one night where come and display your hobbies. Correct. So then public अपना also called as companies got talent. Companies got talent. Yeah. Oh my lord. And then you just have to sit there and listen to your own friends and colleagues sing badly on stage. It gets. I have. Sorry, go for it. No, what I was saying is, first of all, I want to say, irrespective of what service say, I want to make a point. Please have offsites क्योंकि हमको बहुत काम मिलता है. तो अरे please, please have and please call us. Yes, please have. हम लोग आके, और मुझे not complaining. one of the companies got talent में ये था, जो ओपनिंग एक्ट कभी कभी कंपनीज गॉट टैलेंट होता है, एंड बहुत फन होता है. दे मेड अ स्किट, ठीक है, एंड इतना बैडली कोऑर्डिनेट. एक स्किट में one person could not make it, so that 3 people are acting, that person is on the screen. Wow, bro, that's intense. But the assumption you have to assume कि वो यही है. तो उसका कुछ डायलॉग है, एंड देयर लाइक अ फनी स्क्रिप्ट ऑन द कॉर्पोरेट कल्चर, जो भी उनका लाइक, अरे वो तो कल तक टारगेट पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? बोला सिंपल, दोनों को साथ में बोलना है, दोनों है. तो ये सिंपल बोल रहे हैं, बात तक गया नहीं है नेटवर्क में. फिर 3 मिनट के बाद सिंपल. It was just crazy. No, and they continue doing it. I was just like, they did the whole thing, and they are, I don't know, the rehearsals ki time in their head it's very funny. It must be funny on paper, but it's too much fun. It actually was very funny, but not the way they intended it. But it was so funny. And it's most people don't know that this was the Paresh Rawal play that Rahul saw. Simple. Guys, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, तुम लोग चालू रखो. बाय, सी यू. ये देख कॉर्पोरेट अपना टॉपिक भी है, कॉर्पोरेट लाइफ की. हार्ड स्टॉप कॉर्पोरेट लाइफ के अपने जाने के लिए आई हैव हार्ड स्टॉप. बाय गाइस. जा. तो ऑब्वियसली आज का एपिसोड कॉर्पोरेट लाइफ पे हो गया, एंड एज यू कैन सी बाबा अपने कॉर्पोरेट लाइफ और कॉमेडी लाइफ दोनों को जगल करते हुए जा चुका है मीटिंग के लिए. सो राहुल, क्विकली, वीव ऑब्वियसली स्पोकन टू यू अ लॉट अबाउट इट, बट वीव गॉट सम फन वर्कप्लेस फैक्ट्स, ठीक है? तो आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट एंड लेट्स सी उसमें से तू कितने पे अग्री करता है, या तूने क्या क्या किया है उसमें, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, ट्यूसडे इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव डे. Okay. Is this true? Were you most productive? Might be. I think, yeah, Tuesday, Wednesday would have been my guess if you had asked, because Monday का तो मरा हुआ रहता है. Monday दिन ही ऐसा जाता है ना कि यार अभी. Wednesday, मेरे हिसाब से Wednesday, अभी मेरे टाइम में वर्क फ्रॉम होम नहीं था,
तो वेंसडे इज लाइक इट्स अ स्वीट स्पॉट, यू नो, अरे 2 दिन में फ्राइडे आ रहा है, यू नो, तो वो अरे यार पिछला वीकेंड खत्म हुआ वाला फीलिंग कम रहता था, और वेंसडे तो यू विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड you're okay to work is what I would have seen, right? Right. No, I think, Mondays, half your day goes in like saying it's Monday, 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 तेरा दिन चला गया. Then बहुत खराब Tuesday is होता है most Monday. productive because it is not Monday, right? Wednesday is more productive because, hey, it's just 2 days away from the weekend. Yeah, Thursday is like, अरे 4 दिन हो गए हफ्ते का भाई. और correct. फ्राइडे के आज पार्टी करने वाले. इसलिए ऐसा. अब मंडे मनहूस है, मंडे इज मनहूस बिकॉज मंडे इज नॉट जस्ट, मंडे डजंट स्टार्ट फ्रॉम मंडे मॉर्निंग, मंडे स्टार्ट्स फ्रॉम संडे इवनिंग. Sunday night. सेट हो जाता है Yeah, संडे yeah. शाम से, कि हो गया यार वीकेंड, हो गया यार वीकेंड हो गया. मंडे बहुत खराब है, मंडे इज द वर्स्ट डे. Correct. या It was called Manu's Day only, but they only used Man because Manu's Day लंबा हो रहा था. इसलिए Manu's Day, Tuesday. मंडे, और हमारे लाइफ में भी था यार, कॉमेडी लाइफ में मंडे वाज द डे हम लोग जाते थे कैनवस लाफ क्लब जैसे ओपन माइक करने को. Yeah. सबसे अच्छे अच्छे वेन्यूज में 4 लोग आते थे देखने को, हाँ. क्योंकि मंडे और हाँ. ओपन माइक नाइट्स. यार कैनवस लाफ क्लब यहाँ पर हम लोग 300 जन जब आते थे कितना मजा आता था. 5 जन के लिए ओपन माइक कर रहे हो, वो हंस नहीं Yeah. रहे, फिर तुम उनको गाली दे रहे हो कि तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमने खुद नहीं पढ़ा है. तो इधर आया 61% of the people in a recent survey said that work from home is far more productive than work from office. तेरे टाइम पे कभी नहीं था ना work from home. बाकी 39% ऑफिस में थे तो उन्होंने खोला ही नहीं है. मेरे टाइम में वर्क फ्रॉम होम कब होता था, अरे बारिश गिरने वाला है, बहुत बारिश गिरने वाला है, ट्रेन फंस जाएगा, हाँ. देखो कुछ भी हो सकता है, तो बहुत सारे जाओ जाओ तुम मेरे को नहीं छोड़ो. But they used to be like legit things, right? कि अरे, और especially if you're working in Mumbai, मतलब बारिश पड़े तो भाई देख ऐसे सोने वाला है, या फिर There are you 3 know there's days going in to the be monsoon that you traffic. will get. Yeah, yeah. Will get. So one of the best like fun conversations with your boss is like, boss, hello boss. Boss, actually I'm not feeling under the weather. I'm feeling under the weather today, so I'm not. अरे यार, but today is that meeting. I know boss. अच्छा do one. अच्छा ठीक है, taken off. No boss. I will join from home. तेरे को छुट्टी भी नहीं देना है. हाँ. You don't want to waste your holiday, but you don't want to go to work also. तो history. Rahul, how many, like, have you offed any of your relatives to get a holiday? Or do you know of people who have done that? कि अरे मेरा one by one family is just decreasing. हाँ, मतलब and इतना desensitize हो जाते थे ना लोग, unless if someone says कि someone like my family member, मतलब real close लोग, my चाचा का ये कोई तो चाचा का neighbor, it used to be so. No, they would also keep it very like general, right? My uncle. तो मैं चाचा भी नहीं बोल रहा, मैं मामा भी नहीं बोल रहा, मैं अंकल कुड भी एनी अंकल, वो मेरे डैड के भाई के दोस्त के बेटे का भतीजा है, ठीक है, अंकल है दूर का. इतने नहीं, बार मैंने तो कभी नहीं किया है, बट हाँ वरुण जैसा बोल रहा है, या ऐसे वेग होते थे लोग. हाँ, न्यूट्रल. बिकॉज तू दादी नहीं बोल सकता ना, ऐसे दादी बोल दिया तो फिर एकदम, बिकॉज व्हेन इफ एट ऑल God forbid it actually happens, nobody is going to take you seriously at that point. You're the boy who cried, my dadi has. Dadi. Like someone had said this, कि like yeah, कि अरे this person has to is not coming up with leaving early because his grandfather passed away, and everyone was very oh shit, grandfather, close family member, and then पता चला grandfather का cousin passed away. तो उनको भी ये grandfather ही बोलते हैं, ठीक है. तो At this point, if anybody is at the same age also ना, DNA connection नहीं है. और फिर देन ऑफिस में बात चलो यार, ग्रैंडफादर का कजिन सब इतना क्लोज नहीं होते हैं. फिर एक और तो नहीं हो सकता है थोड़े लोग, व्हाट इफ ग्रैंडफादर फिगर था, नो दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ग्रोइंग चाइल्ड. हाँ हो सकते हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं. स्पेकुलेशन. फिर भी 1% चांस है ना, व्हाट इफ ग्रैंडफादर का कजिन वाज रियली क्लोज, हो सकता है, यू नेवर नो. बट करेक्ट, ये तो पक्का झूठ झूठ बोल रहा है. Okay, next is workers spend more than 25% of their day in reading and answering emails. Now the hack is if they check emails at set points in the day, it will increase their productivity. ये मानता है? Yeah, but this hack is effective if you want to be productive. पहला तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं. मोस्ट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बी प्रोडक्टिव, ठीक है. Correct.
तो नहीं, मतलब कि आराम से जितना टाइम ऐसे देखो, जॉब में एक तो वो होता था ना, वो मोमेंट्स होता था व्हेन यूज्ड टू फील नाइस, लाइक वैसे एक रिलीज स्टेप होता था। क्या होता था, एक तो जो चाय सुट्टा करता है, चाय सुट्टा ब्रेक, वॉशरूम जाना टू बी लाइक, एंड अगर तुम्हारे इसमें टॉयलेट अच्छा है तो बस तुम जाके बैठ, निकलते ही नहीं थे लोग, आराम से उधर चिल करके आते थे। तीसरा, छोटे छोटे मोमेंट्स ये होते थे जब फायर ड्रिल, अरे वाह अरे मस्त मजा टाइम पास, जाओ फायर ड्रिल करो। और और ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस ये होता था, लाइक अंदर ही अंदर ये तुम्हारे यूनिवर्स, माइंड के यूनिवर्स में चलता जब तुमको ईमेल चेक करना हो, ऐसा एक मंडेन जॉब जिसमें कुछ एफर्ट नहीं है, मतलब ऐसे बेवकूफ वाला काम, जस्ट तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम जस्ट 100 दैट यूज्ड टू बी योर 5 मिनट ब्रेक फॉर योरसेल्फ, जस्ट तुम ये करो। तो आई थिंक मोस्ट पीपल डिड इट फॉर फन, बट इट इज ऑल्सो गुड थिंग टू सेव। कोई आएगा तो इट इज लाइक, अरे यार यू सी हाउ मच वर्क आई हैव, यू सी 100 emails यूज्ड टू बी वर्क। ऐसा नहीं कि वो ईमेल में क्या 1,100 emails ब्रो, क्या है मैं सुबह से, एंड इट्स बी कंपटीशन कि मेरा काम तेरे से ज्यादा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, अरे ज्यादा ये तो कुछ नहीं है, मुंबई का ठंड, दिल्ली का ठंड रियल ठंड है, तो तुम हाँ मर ना, सफर करना तो उसमें। ये कैसा पॉइंट हुआ तेरा, व्हाई इज दिस अ पॉइंट इन योर फेवर दैट तुम्हारे घोटे जाम होते हैं ठंड में, यू नो व्हाट आई मीन। ये मुंबई का ठंड है, अरे हाँ अच्छे से नहीं है ठंड, कूल है तो। बट I like this. तेरा फेवरेट प्रिटेंडिंग टू वर्क वाला सीन तूने क्या किया? ओ, एक तो मैं कॉर्नर वाला ये था, स्पेस बार बैक स्पेस यूज्ड टू बी माय फन थिंग टू डू लॉट ऑफ टाइम। स्पेस बार बैक स्पेस, स्पेस बार बैक स्पेस। तो अगर कोई सिर्फ बहुत पीछे से देख रहे हैं तेरे स्क्रीन के तो इट लुक्स लाइक अरे हार्डकोर ऐसे काम चालू है, लेकिन तो स्पेस कॉर्नर का बार बिगन बैक है, स्पेस स्पेस बार बैक स्पेस, स्पेस बार बैक स्पेस, स्पेस बार बैक स्पेस, ऐसा होता है। चलने का होता है बहुत, ऐसा चलने का होता है ये। मैं महिंद्रा में काफी बार मेरा फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर जाके वापस आता था, बट ऐसे वाला फेस करके बस, जाके चल के, लिफ्ट नहीं लेता था, चल के ऊपर तक जाओ, चल के ऊपर तक आओ, कोई पूछेगा भी नहीं, ऐसा लगेगा कुछ तो काम किया है। हाँ मैं मैंने देखो, महिंद्रा जैसा बड़ा कंपनी का एडवांटेज ये है कि बहुत वॉशरूम्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग वॉशरूम, तुम अपने एक्सेस कार्ड से कहीं भी जा सकते हो, एंड देन तू सीधा ए विंग से डी विंग जा रहा है। राहुल का टॉयलेट गया सर, कहाँ पर बोले तो डी विंग गया उसको। यार राहुल के बायो ब्रेक्स तो बढ़ते ही जा रहे बहुत हैं. बहुत एक बार बॉस भी वही था, अरे आप भी बॉस, हमें क्या मालूम था आप भी डीविंग के शौकीन हो। But I really liked that thing that you said कि पब्लिक उधर घंटों घंटों बैठा है, बैठते जा रहे हैं। निकलता ही नहीं है बाहर. या कि क्या खा लिया तूने भाई? कुछ नहीं खाया, बस बैठने के लिए जा रहा है, इट यूज्ड टू बी अ प्लेस टू सिट, लाउंज एक्सेस है वो, Gives a whole new meaning to VIP lounge. Okay, so I used to next. walk a lot, yeah, that's I used to walk ऐसे, फ्लोर चढ़ो ऊपर It's नीचे आओ। good for health also. नहीं लेकिन तू ऐसे दिखा रहा है कि तू कॉल पे कि ऐसे सिर्फ सड़ा हुआ मुंह बना के जा रहा है। क्या हो गया राहुल को? No, but that's convincing, man. If I saw that, I saw it right now. I was like, yes, that looks like he has And It looks thought. imagine like- walking hurriedly with this Yeah, face. तो नहीं इल्यूजन नहीं उसके बात मत कर, फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट है, बात मत कर। प्रिंट आउट लेके जाने का, बॉस कुछ भी ऐसा प्रिंट देगा ना मीटिंग में, मैं पहले बोला आई गो एंड गेट, प्रिंटर का ही और रहता है हमेशा, प्रिंटर बाजू में नहीं रहते, कॉर्पोरेट में प्रिंटर बाजू में रहता ही नहीं, कहीं भी रह सकते, तो तुम आई विल गो एंड गेट इट, तुम जाओ लेके आओ। ये सब चीजें करने के लिए, किसी का बर्थडे है तो मैं इन्वॉल्व हो जाता था, एचआर में नहीं था फिर भी मैं बोलता था मैं केक कहाँ से लाना है, ये सब ऐसा काम मुझे पसंद था, मैं जाके लेके आता हूँ ना केक, अरे मैं जाऊंगा 2 किलोमीटर दूर, क्या हुआ मैं जाऊंगा यार, मैं अपने प्रिय सह एम्प्लॉय प्रणीत के लिए इतना नहीं कर सकता मैं। और राहुल आता है उसका सीधा. नाम प्रणीत नहीं, उसका नाम प्रतीक है। हाँ वही कोई पवन की बात कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी। हैप्पी बर्थडे परीक्षित। Okay, next. 70% of employees say that the motivation and morale would improve massively if their managers said thank you more. नहीं, बाकी 30% को मैनेजर ने बोला कुछ भी सर्वे में पार्टिसिपेट किया और मेरे बारे में बोला। Were you a manager like that, Rahul? Like no, a very... I never got to be a, मतलब मैं ई कॉमर्स मार्केटिंग करता था तब, आई हैड अ स्मॉल टीम व्हिच वाज नॉट जस्ट रिपोर्टिंग टू मी एंड समवन एल्स, बट आई नेवर हैड लाइक, इट वाज नॉट लाइक अ डायरेक्ट रिपोर्टिंग,
So I never had the chance. और corporate branding में जब था महिंद्रा में, it was all our boss was there. There was one more senior, but it was never like reporting. So I never had that. But वो एक रह गया. वो टाइम में मैं वही मेरा ख्वाब वही था कि मैं but बैठूंगा. what about your bosses? Like तेरे को ऐसे बॉस मिले जो तेरे को ऐसे मोरल तेरा बूस्ट होता है because they are very appreciative of your efforts and they care to say thank you as opposed to give you tough love. Yeah, my Mahindra का boss was super encouraging. Like out of the like मेरा appraisal मुझे याद है जब मैं गया था अप्रेजल सेशन क्या होता है, 1-on-1 होता है और तुमको लोग झूठ ही बोलते हैं. ठीक है, सब झूठ बोल रहे, कोई सच नहीं बोल रहा. बॉस झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, सिर्फ झूठ हो रहा है. मैंने इतना काम किया, मैं ये किया वो किया, और हर चीज को छोटा छोटा मैं ब्रेक करने का. अगर तू बोलेगा कि तू सेल्स टारगेट पूरा किया, आई मेड द होल रोड मैप फॉर द सेल्स. आई टुक इनटू काउंट लास्ट ईयर सेल्स एंड वी प्रोजेक्टेड द सेल्स डेटा दिस ईयर एंड देयर सर्टेन कैटेगरी वी मेड अ रीजन वाइज कैटेगरी allocation. We had to change that. I had to liaison with the ऐसा ऐसा करके बकवास करो क्या था सेल्स टारगेट. तो मैं ऐसे ही बकवास कर रहा था और मैं ये वो टाइम में था, स्टैंड अप भी कर रहा था साइड में. हाफ ऑफ द माइंड वाज नॉट एट माय वर्क. मैं कर रहा था बीच में मैं रुक गया. मैं बॉस को बोला यार, और मैं ऐसा एक ऑनेस्ट मोमेंट आ गया था. मैं बॉस मैंने कुछ नहीं किया. और इसी ऑनेस्टी के लिए मैं आपको देता हूँ 10%. बॉस की जो फट गई ना वो मोमेंट, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. यू आर प्रिपेयर्ड फॉर तू झूठ बोलेगा, मैं बोलेगा तू झूठ बोल रहा है ना. बॉस की फट गई. बॉस मेरा बोला नहीं राहुल ऐसा नहीं, तूने काम किया. नहीं बॉस नहीं ये फिर बॉस कर रहा है, ये देखो तुमने किया, ये लास्ट ईयर तुमने सेल्स रिपोर्ट पर लिएजॉनिंग भूल गया तू राहुल. तूने सिनर्जाइज भी किया. तेरा कंपनी आउटरीच और आउटफ्लो भी बढ़ गया. सो बिकॉज ऑफ दिस कांग्रेट्स, वेल डन बॉस. तेरा अप्रेजल खुद ही देके खुद ही तेरे को पैसा दिया. और इसे राहुल मार्निंग में 30% अप्रेजल. You know something, dude? I think this boss realized as Rahul was being honest कि fuck, मैं भी ध्यान नहीं दिया बे इसमें. ये तो काम नहीं करे, मैं भी देखा नहीं इसको. मेरा बॉस हीरा था. अप्रेजल मिल गया. मेरा बॉस हीरा था. He was like जेन्युइनली, मतलब बहुत बॉसेस कैसे होते हैं ना, मोस्ट बॉसेस, बहुत नहीं बोलना चाहिए, लिंक्डइन में आ जाएगा चाटने के लिए लोग. तो लिंक्डइन में वन ऑफ द थिंग्स ना, तुम बॉस में जो बोलेगा ना तो वो आएगा कोई तो, नॉट माय बॉस, दे विल टैग देयर बॉस, टैग करेगा. चाटू. आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज बट इन व्हाटएवर इन जो भी एस्बेस्टॉस जो भी है उनका कंपनी का नाम, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव 3 जन को टैग कर दिया दीस बॉस. एंड वो वापस रिवर्स चाट. दैट गाय इज रिप्लाइंग चल काम कर. आई विश why go. नहीं वो भी चाटते हैं वापस. नहीं वी आर आल्सो ब्लेस्ड विद अमेजिंग reproducing in the comments. और ये सेम एम्प्लॉयज को अगर तू वो दूसरा एक ऐप देगा, मालूम है व्हाट्स इट कॉल्ड, ग्लास डोर और समथिंग, वेयर यू कैन गो और तू अपने कंपनी के बारे में अनोनिमसली जो बोलना है बोल सकता है. ट्विटर. No, there's an app, right? Like I don't remember, Glassdoor or something it's called, where you can actually go and talk about a company that you work at without having your name, etc. there. So whether it's company politics, how the behavior is, falana timka, pay structure, ऐसे सब. But तू कभी चाटू बना है क्या लाइफ में? नहीं यार. बॉस का चाटू? I don't think so. मतलब मेरा I have had really tough bosses wherein I was struggling to figure out how to work, and then I had a really amazing boss also. तो मेरा लाइफ बहुत ही इजी कर दिया था. मतलब इतना कि जनरली बॉसेस का तू छुट्टी पे जाता है ना तो लोग प्रेशर पे डालते कि तेरा छुट्टी वाला काम तू बाद में करेगा, कब करेगा. मतलब वो एक ये रहता है प्रेशर. हाँ ठीक है छुट्टी तो ले रहे, नेवर खुशी नहीं देते, छुट्टी है जा, बट ये तू करेगा क्या? विल यू कनेक्ट फ्रॉम श्रीलंका योर मैं वॉशरूम से कनेक्ट नहीं करता यहाँ पे श्रीलंका से. बट वो होता है. मेरा बॉस उल्टा था लास्ट में. इफ आई एम गोइंग, उनको जाके बोलेगा ना आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे, एक सवाल नहीं पूछता था, विच वाज सो न्यू. ओके फ्रॉम व्हेन टू व्हेन बोलता था, ओके एंजॉय हैव अ ग्रेट डे, ऐसा बोलता था. एंड देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही यूज्ड टू डू माय वर्क. Bosses are supposed to know what their subordinates are doing so that they can fill in if they when they are not that. Most bosses को idea ही नहीं है, तो वो लोग प्रेशर में डाल के जाते हैं. ये सब जो भी तेरा काम है तेरे को मैं तू कर. Dude, this guy is worth tagging on LinkedIn, man.
Yeah. This boss, Well, sir. he's legend boss. मतलब तो मेरा वो मैं I went on a high type था. 3 चैंपियंस लीग जीता जिडान की तरह, and then I quit type था. So I had a great. Yeah. Okay, another thing. If you work 40 hours a week from the age of 20 to 65, you Oh will have wow. clocked 90,000 hours of work in your entire lifetime. Amazing. Matlab, and if you are Narayan Murthy, then you're expected this to be 1,80,000 hours in your lifetime because 18 घंटा 70 वो काम hours. करने पर. हाँ Very nice. 80 घंटा हफ्ते में काम. In fact, Netherlands was the first country, industrialized country, to reduce their work hours to under 30 hours a week. Yeah. Because मतलब they used to do drugs and time used to slow down. So they had more time per minute. No, but they do that, right? Even in Germany, companies in Germany, they'll have 4-day week, and their work culture is such कि अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है ना, तो वो 8 घंटा काम कर full power. It's weird because a lot of my family friends who are working in Germany, they still get a lot of work from home. मतलब हफ्ते में एक ही दिन जा रहे, but the proficiency of work has increased incredibly. Like people have been able to sort of juggle that. उनको थोड़ा घर पे chill भी करने मिल रहा है, काम भी कर रहे हैं, and they've been actually able to give out more. And ये ना अपने इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब इंडिया में कल्चरली तो इशू था ही जब मैं ये था, बट इवन देयर इज मोर. आई फील वेरी बैड फॉर एवरीवन इन इंडिया बिकॉज नॉट जस्ट कल्चरल इशू ऑफ द वर्क प्लेस जो है, आई थिंक इट इज फार बेटर नाउ. बट जैसे कि मुंबई में मैं काम करता स्पेसिफिकली, मैं अगर चेंबूर से जा रहा हूँ वर्ली, द ट्रैवल इटसेल्फ वाज अ स्ट्रगल. इट इज, एंड बाहर के देश में लोग रास्ते में चल रहे, कॉफी हाथ में कॉफी लेके बात करके, दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. हैव यू एवर हैड अ कॉन्वर्सेशन? मैं मुंबई में चलते चलते कभी बात किया है? आगे लेकर गिर जाएगा खड्डे के अंदर, ये आ रहे ये कोई उड़ा देगा. So I think, और वो एक स्ट्रगल होता है, लाइक एवरीवन इन मुंबई, तो दे हैव टू, वंस द ऑफिस टाइम, उनका ट्रेन टाइमिंग्स आर फिक्स्ड कि ये ट्रेन पकड़ो तो भीड़ कम रहेगा, एंड देन इफ थोड़ा भी मिस होगा उसके पहले शेयर होटल के वहां तक जाना है. इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज. तो आई थिंक वो ओवरऑल ये इशू होता था. अगर ऑलमोस्ट एवरीवन स्टेड वेरी क्लोज टू देयर वर्क प्लेस, तो आई थिंक इट वुड बी मच इजियर. बट अपने इधर और भी बहुत सारा स्ट्रेस है, तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम इन इंडिया इज अ ग्रेट थिंग for a lot of people. Because I think mentally you are freeing them up of 4 hours of grueling travel. I'm not saying don't go to work. Again, I'm nobody to talk about corporate life. I've never been, but seeing friends, family, etc., being in that thing, just knowing that maybe they don't have to go to work physically 5 days a week. Go twice. Right, pick top and end or top and middle of the but week. that I think might depend on industry. Some industries or some profile might require you to go. Yeah. But मैंने अभी this is my knowledge from corporate shows I've done, and of late, the lot of companies I've met, the cultures have changed drastically in the last 10 years. Like a lot of them have three working days and 3 from home. For 2 from home, work from home ऐसा है. And it's quite chill, and it is okay to take off when you're not feeling like it without having any rest. So ऐसे सब बहुत नए चीजें, बोला क्या बात है, ऐसा सब होता है. तो ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस हमारे पास तो वर्क बैलेंस था. तो मैं तो एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, ये मेरा फेवरेट इंसिडेंट है. आई कुड नेवर पुट इट इन अ स्टैंड अप बिकॉज इट्स टू रियल. एंड ये था, मैं वर्ली में काम करता था चेंबूर जाने का. तो वही होता था रात को परेल का स्टेशन, परेल तक आइदर यू टेक अ बस और अ शेयर टैक्सी. तो उसमें ही ऑलरेडी योर फाइट इज देयर. बॉस एक 5 मिनट ज्यादा लगा रहा है, यार मेरा ये मिस हो जाएगा, ये टाइम वहां पहुंचना है, 8:36 का ट्रेन पकड़ना है. somehow you struggle हो, शेयर टैक्सी में जाओ, बैठो, कोई आके बैठ जाएगा, मतलब सब. Finally you get it, you reach the station and station is packed. Okay, तू आगे ऐसा ये डाल रहा है, बैग आगे डाल रहा है, and you know how Parel station is, like it's packed, and you're walking like this, and you have to go to that compartment के वहां जहां पर chances are there कि भीड़ कम रहेगा, but you're walking by the edge because इतना भीड़ है, because there is no other place. ये साइड गिरेगा. You have to walk and you have to reach there. इतना struggle, and then you finally get inside a ट्रेन, एंड तेरा माइंड में पूरा चीज होता है, मैं अंदर घुसा भर, आई वांट टू स्टैंड. बैठने का तो जगह नहीं, स्टैंड बाय द साइड, बस वहां कोई उतर जाए, बिकॉज दैट्स द सेफर. वंस टू यू प्लैंक योरसेल्फ देयर,
प्लांट हो सकता है, यू आर देयर ना, ऐसा तो यू हैव टू बी देयर ताकि उतर सके। तो ये था, पहुंचा है उधर, भीड़ है, आ रहे हैं, हाँ। एंड देन कभी तो कुर्ला में कुर्ला इस बार सेंट्रल स्टेशन का चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लोग उतरते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ते भी है। तो ऐसा वो एक ये हो जाता है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है उतरने वाले और बहुत उतर रहे थे, एंड एक चढ़ रहा था, एंड एक ऐसे ही कुछ तो था, ये एक आदमी आगे खड़ा था क्योंकि उसको नेक्स्ट स्टेशन में वो हिल नहीं रहा था, ये आदमी आया, हटना बोला, वो नहीं हटा, और झगड़ा वो होता है ना स्टैंडर्ड, हटा बोले अबे क्या हटता क्यों नहीं है, जगह नहीं दे रहा है तेरे, तो पहले बार और ट्रेन लोग में ब्लॉक कर देते, तू भी निकल नहीं सकता। नहीं नहीं, ट्रेन चलने लग गया, अच्छा, चलने लग एवरीवन से, गया। एंड देयर फाइटिंग, ओके, पैर क्या मारते हैं, तू पहले बार ट्रेन में चढ़ा है क्या, अरे तू जब से पैदा नहीं हुआ तब से मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ, अरे तू उससे पहले तेरा दादा मैं पैदा नहीं हुआ ट्रेन तब में ही से पैदा हुआ है। तो ये चल रहा है, ओके, एंड दिस इज द माय फेवरेट मोमेंट है, ऐसा चल रहा है, ये गाली दे रहे, वो गाली दे रहे, ये रहे, जाना तू, एंड बाकी लोग सब अपने धुन में, नो वन गिव्स अ फक, ठीक है, एवरीवन जाना जाना है, अरे तेरे को देख ले, अरे तू देख लेगा, एंड सडनली वन गाय वाज अबाउट टू रिटेलिएट, अरे, एंड देन लाइक बेंचो ये भी कोई लाइफ हुआ, he said that, and that moment, those second, all of us around heard it, and all of us felt it, like ये क्या कर रहे हैं हम लोग, and then all of us burst out into laughing. 5 seconds. Even the guy who was fighting with it, there was a 5 second gap, and then all of us burst out into laughing. It was so real. And then Damn. you just realize That's so how fucking true, dude. कैसे जी रहे, like every, because all of them, the person who was coming and also उसने उसके इसमें प्लान किया रहेगा, अभी उतरूं ताकि ये टाइम में पहुंचूं तो ये ट्रेन मिलेगा, नहीं तो मैं आगे चेंज नहीं कर, everyone is going through their own अंदर ना। Yeah, for sure. तो उसने जब ऐसा बोला, ऐसे नहीं ये भैंसो ये भी कोई लाइफ हुआ, we all were like हाँ भाई ये तो। And you also realize in that moment that you're not fighting because of what happened then. You're fighting Yes. because of everything that has happened. Happened The in the whole lead up to day. that. And Yeah, this is the the whole only day. place you can take it out without without the risk of being fired, without the risk of putting your job in jeopardy. And it's just manifested in different ways. Proper Rajkumar It's a Irani great scene tha, Bombay bro. story. That's a great It's a Bombay story. beautiful. But this is one of the, like, for me, we are so privileged comedians, because our freelancers, matlab, obviously there's other struggles for a lot of freelancers, but this, whoever is in this position that you can choose when to work now Yeah. is such a privilege. It's privilege, bro. For sure. For me, it's like one of this. I like Must. that. One of the Must. reasons why I love what we do is I can choose. I don't have to travel when it is so much stress. ये वो everything. So yeah. But this So, is a hey, another. Kautuk, तू मूवी बनाएगा, ये सीन डाल यार प्लीज, मेरे को चाहिए। 100%. 100%. It's beautiful. मैं act करेगा Yeah, and it's a उसमें. perfect Bombay story. This one friend of mine had said, she used to work in a full corporate setup here, and for her it was like तू 16 घंटा काम कर रहा है, मतलब after finishing multiple meetings you're on your way back again in this train slash cab slash bus, whatever, you're still getting emails, people are still calling you, it's 8:30, you're tired, right? But you sort of get used to this grind and you do it for years. Then she moved out of India, and in her first few days of the job she still couldn't shake off her leading up to this job wala life, right? So usne, in the first week of starting this new job, there was something that the boss wanted from her, that she emailed the boss at 8 p.m. just out of boss ka phone hai ki why are you working? So she's like, I'm sorry, wo dar gayi, why? I'm sorry ma'am, is there anything wrong? No, it's 8 p.m. Why aren't you at home? Why aren't you eating dinner? Why aren't you watching TV? Why? I don't need this right now. I'm anyway not going to act on it right now. This is going to happen during work hours, which is in the morning. And she's like, that's the day she just suddenly, she's like, wow, ऐसा भी होता है कि मैं रात भर इसको मेल करने की जरूरत नहीं है. And I think that is, maybe now it's changing. This is also older, like 8-10 years ago wala scene. I think अभी हाँ, change और हो रहा है. अंडर देख, मैं महिंद्रा में काम करता था, लाइक कॉर्पोरेट विद दिस बॉस, देयर वर डेज व्हेन वी हैड, वो होता था कैंपेन आ रहा है तो वी हैव वर्कड ऑन सैटरडे संडेज आल्सो, बट वो बहुत अलग होता था, कल्चर ऐसे ही था, खुशी खुशी काम करते थे हम लोग, खुशी खुशी आते थे, एंड वो वर्क भी सैटरडे आ रहा है, एवरीवन न्यू दैट यू आर कमिंग ऑन अ सैटरडे, तो टू बी चिल, वी विल टू टेक ब्रेक्स, हमको लंच के लिए बाहर लेके जाते थे, वी यूज्ड टू ऑल हैव थोड़ा फन बाहर आएगा, paced था, well paced था, तो and it is when it is not a every weekend thing, once in a while, so I think it's also so much the culture na, so and culture flows from the boss, रे, तेरा boss
और तेरा बॉस अगर तू 6 बजे निकल रहा है, ऐसा क्या आज भी हाफ डे, ऐसा सब टॉन्ट मारने लग गया, तो फिर तो Oh yeah. मतलब वहां तो कोई कल्चर नहीं, Yeah, आज भी yeah, हाफ डे। yeah. 6 बजे क्या आज भी आपने like मस्त। वो सब LinkedIn पे लिखते हैं ना पब्लिक की, the problem is there are too many bosses, too few leaders. Hilarious. तुमको जितना काम करना है तुम करो, एज लॉन्ग एज तुम्हारे खुशी से जितना काम कर रहे हो तुम करो। एज अ रूल अगर तुमको 17 घंटा काम करना है, 18 घंटा रहेगा, तो दैट इज वेयर फॉर 70 आवर वीक शुड नॉट बी अ रूल। बट Yeah. तुमको दिल से काम करना, करो ना, बिंदास करो यार। Yeah. इनफैक्ट Correct. हमारी टीम ज्वाइन करो, हम लोग देते हैं एडिटिंग वर्क, राइटिंग वर्क, करो तुम। सब उधर उधर इंडिया के पास सब रुके कि भाई इधर पब्लिक एक्चुअली 18-18 घंटा काम करने के लिए रेडी है, बुलाओ इनको, इधर बुलाओ। बिकॉज अपना वो भी है ना सीन कि अपने इधर इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन, इतना कंपटीशन है कि तू अगर नहीं करेगा तो कोई तो बोलेगा ब्रो आई विल वर्क 70 आवर्स फॉर लेस मनी, हाउ अबाउट दैट, हाँ चलो आओ। आ जाओ। करेक्ट। I'll give my 110%। नहीं है Yes. पॉसिबल, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 110% दे ही नहीं सकता, एक और चाहिए तू, ठीक है, उसका 10% जाना पड़ेगा, तू नहीं दे सकता 110%। तो अगर मैनेज किया 110% देना, तो वो तेरा एट द मोस्ट 100% हो सकते हैं मैथमेटिकली। तो तेरा कैलकुलेशन अबाउट हाउ मच और तेरा कैलिब्रेशन ऑफ योर ओन सेल्फ इज रॉन्ग, नॉट दैट 200। सही है bro. Some good advice to people who are watching or in the corporate thing. Any hacks to survive in corporate life you have before we wrap up? Dude, find a role that you like. ये है biggest hack। बाकी सब easier hack है। तुम find something that you like doing, and I'm sure और corporate job पे इतना ज्यादा variety है ना of the ये, but people, it's easy to get stuck in what you're doing because there is also so much fear around it, insecurity। इससे मैं चेंज करूंगा, जैसा मेरे को एडवर्टाइजिंग में घुसना था, मैं बोला सैलरी ये वो, मैं बहुत सारे देयर आर थिंग्स टू स्टॉप, बट इफ यू फाइंड अ रोल दैट यू लाइक, देन बाकी सब इज वर्क अराउंड। देन बॉस अच्छा नहीं है तो डिपार्टमेंट चेंज करो, मतलब ये जॉब चेंज करो, कंपनी अच्छा नहीं है तो वो सब पॉसिबल है। बट हाँ, स्टैंड अप मत करो, काम करते रहो। कॉर्पोरेट शोज के लिए हमें बुलाते रहो, ठीक है। बुलाते रहो। करेक्ट। ओके राहुल, एंड क्विकली बिफोर यू लीव, बिफोर वी ऑल लीव रादर, क्योंकि मैं और कौतुक अकेले अभी बैठ के नहीं करने वाले। बट आजकल इंटरनेट पे तू ऐसा क्या देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है? व्हाट ऑन द इंटरनेट हैज कॉट योर अटेंशन? मैं तो बहुत ही कम, मेरा इंटरनेट यूसेज बहुत कम हो गया। मैं इंस्टाग्राम में भी हार्डली रहता हूँ। How come? How so? What अभी तो is? मेरा इंस्टाग्राम डिलीटेड है लास्ट 10 दिन से, मैं छुट्टी पे भी गया था तो मेरे को चाहिए, और मैं जनरली कम कर दिया। मतलब आई वांटेड टू बी ऑफ स्क्रीन एज मच, तो मैं पोस्ट करता हूँ एंड देन आई फॉरगेट, सो टाइम ऑन ये, तो आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ स्टफ। द ओनली थिंग आई रीड ऑनलाइन, ओके, देयर आर टू थिंग्स आई एम इंटरेस्टेड इन राइट नाउ, वन इज spirituality and other is football, so these are the only two things I'm reading about, so I have no idea, and some politics Anything? I'm which interested in this. I know the football side of it. That yeah the Klopp obituaries that you We will can read this week. Klopp man. obituaries, and I can already see the pillow in the background, and we all know how big a football fan you are. But yes, spirituality. Are you a Yeah. spiritual person? Like, how did you suddenly ki? If you're comfortable talking about it. If you are, या मतलब ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी में तो इतना हाई एंड नहीं, बेसिक ये मैं नहीं था स्पिरिचुअल पर्सन, बट आई लाइक डिस्कवर्ड लास्ट ईयर एंड इट्स बीन वेरी फैसिनेटिंग, सो या Any spiritual ट्राइंग टू बी practice that you माइंड। would, mindfulness. हाँ, तो there is an app, so I don't know if I can say it. Kanan introduced me to an app called Waking Up, which has been amazing. It's a meditation app, mindfulness meditation, and uske through, and then it's like any topic you get interested in, yeah. Then मैं बहुत सारे वीडियो, मेरा YouTube सब देखे तो वही रहेगा, अरे no videos of Rupert Spira, Eckhart Tolle, and people like that. तो मैं वही सब सुन रहा हूँ आजकल, तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है वो सब सुनने को। और फुटबॉल, चाबी अलोंसो आएगा क्या? ये सब ये तो उसको रहने दे भाई, फिलहाल लेवरकुसेन को अच्छा सा खेल खिला के जिता रहे, मजे करने दे उसको यार। आने दो रे वरुण। नहीं अरे अभी तुम लोग 10 आ जीत गया ना जाएगा तुम्हारा। ना। अरे क्या 10 आ गया, अभी तो आए ना हमारे नए छोटे बच्चे मजेदार। Yeah. Okay, But super that's bro. what I've been reading, and and football, a lot of football consumption. It's like sometimes I feel it's unhealthy level because gossip ka gossip. It's Always just like, unhealthy. you All know. speculation, all fraud.
जो होना है वो कुछ अलग ही होता है और अपन चाटते लेकिन रहते the हैं lead up वही. to that, reading on that is just so much fun. You just keep like, what if this were true? And nowadays they've come up with even more different ways of how they will present the football content. Like I've now gone into the history में ये specific time पे football में ऐसे कुछ हुआ था. वो जो आते रहते ना Instagram पे time pass. लिवरपूल, मैं तो अभी लिवरपूल गेम जीता सपोज, which is they're winning a lot, ठीक है, तो देयर इज अ प्री गेम रिचुअल जो Yes. 3 घंटा पहले से स्पेक्यूलेटेड लाइनअप, Yes. प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सब देखने का स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर टैक्टिक्स वो सब देखने का, फिर गेम देखने का, फिर गेम जीता तो 1000 पोस्ट मैच एनालिसिस यूट्यूब में जो भी वो लोग इलीगली कट कर करके डालते सब अलग अलग इसमें देखने का, सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आके टीम प्लेयर वही चीज बोल रहे, कुछ अलग नहीं. You played so well, Trent. Yeah, actually, it was a team effort, and do you think you can be champions? We're taking one game at a time. मुझे पता है तू क्या पूछने वाले, तू क्या बोल रहा है. तेरा jargon मेरे को याद हो गया है. याद हो गया. No, and you know my favorite like subculture in this is when a key player gets injured, na everyone becomes an MD straight. क्योंकि सब लोग घुस गया उसके. Metatarsal injury equals to, I'll tell you, 2 to 3 weeks out. I have done the research. Like, तू कौन है? Bro, एक इधर चल रहा है, उधर क्रिकेट में कोहली ने ब्रेक ले लिया, इससे तो पब्लिक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी आ जाते हैं. अरे नो, ही इज एक्चुअली डूइंग दिस. उधर एबी डिविलियर्स ने हक दिया, जाके बोल दिया ही इज विद हिज फैमिली, ही हैज अ सेकंड चाइल्ड कमिंग ऑन द वे. ये एबी डिविलियर्स ने बोल दिया है जाके लाइव स्ट्रीम में अभी 2 दिन पहले. सॉरी आई इट वाज not correct information. it was some other Virat Kohli I was talking about. But spending lesser time on social media is so amazing, because the lesser time you spend, lesser chances that you will post your opinion, lesser chances that you will fuck up, lesser chances that you never like a stressful life. I think we have to stop ourselves from posting or commenting. That's the I agree. मेरे को लगता है ये तू जब अपने स्पिरिचुअल पाथ पे गया ना, वहां पर आया कि just let go of all the materialistic social things. नहीं यार, जो वही है, मटेरियलिस्टिक भी नहीं, अपना फोन, अपन फोन में रहते हैं ना पूरा. बाहर अच्छा है रे, मैं खेलने जाता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, वो ज्यादा मजा आता है. उसमें तुम बोल सकते हो पॉलिटिकली इनकरेक्ट थिंग्स, बोल सकते हो. क्या हागा तू, तेरे को जंप मारने भी आते हैं, कोई उधर 10 दिन नहीं आता बाद में गाली देने को, हाउ आर यू, सो ये ना वो सब तो अच्छा है सर. तो सही है. But no, we're glad, bro. Thank you so much for coming and joining us. Having said that, मेरा बहुत सारा क्राउड वर्क वीडियो लास्ट 2 साल में मैंने रिकॉर्ड किया था जब मैं गया था. मैं उसमें से रील्स डालने लगेगा. ऐसा मत समझना कि मैं एक्टिव हो गया हूँ, मतलब समझना, बट मैं डालूंगा. और मैं but thanks Varun, thanks for having me. Thanks Kautuk. Are there any shows or anything you want to plug, promote? Not that you need it, but no, I do. एक ही Who Are You is happening. ये तो पुराना वाला है, but Who Are You is happening. बैंगलोर और मीरा रोड ही बाकी है. बैंगलोर सोल्ड आउट है, तो मीरा रोड के लिए आ जाना. only 2 shows remaining, guys. One is Bangalore, one is Mira Road. You'll reach Mira Road faster than Bangalore. और मेरे को डेट याद है, तो मैं गूगल में जाके मीरा रोड सर्च किया. अभी मीरा रोड सर्च करेगा तो पहला राहुल सुब्रमण्यन शो आएगा. क्या ये जो भी तेरा शो का लिंक है उधर नीचे हम डाल देंगे, कमेंट्स में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. 15 मार्च मीरा रोड. So go check out Rahul's shows. Tickets go very, very fast, so make sure you get it immediately. Rahul, once again, thank you so much for joining us. That was it from this episode of the Internet Said So. We were discussing many fun stories about corporate life. So make sure you like, share, subscribe, comment, and share the video with your friends, family, and other corporate people, with your boss. And see you again next week. Until then, it's goodbye. Take care. Bye bye. Salamesh. Hold up. Just Varun, stop. That is Camino, not Kimono. सब बाबा तू बीप करके डाल सकता है. I think. गुड खुद ही एडिट कर खुद को. नहीं क्यों रहने दे ये. बट मुझे